आज क्लास को समस्त को स्वागत। तो एबे स्टार्ट करदबा आमे हमर सेशन कौन ना टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पीआईक्यू सहित अच्छी ता सहित लास्ट को तुम किसी थियोरीज अच्छे अल्प किसी थियोरीज एंड पीआईक्यू भितर भी आमे थियोरीज डिस्कशन करबा। तो समस्ते जल्दी जल्दी सेशन में जॉइन हो जाओ, निजर फ्रेंड्स किंबा किसी ग्रुप्स अच्छी शेयर कर दियो, सेशन को लाइक कर दियो। विल स्टार्ट आवर क्लास वेरी सून। ओके समस्ते जल्दी 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 टिके जॉइन हो जाओ। आज जुहार गायत्री। आज जेहेतु स्पेशल सेशन अच्छी से लगे 8टारे ना मोर रेगुलर क्लास 12टारे ही होची, तो कन्फ्यूजन होगा दरकार नहीं कि 8टारे क्लास होची ना 12टारे क्लास होची। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कौन एते मॉर्निंग रो क्लास मैम जेहेतु आहरी क्लासेस अच्छी तो लॉन्ग सेशन तुम मॉर्निंग रू नेले हे परिबनी, सेति लगी आज रो क्लास मॉर्निंग रू अच्छी। तो समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन कर दियो सेशन को। साउंड स्लो अच्छी। बीएड पाई कौन सब बेले 8टारे क्लास होची, आउ सब सब्जेक्ट केबे हबो मैम? सब सब्जेक्ट हम बीएड सब्जेक्ट पाई 8टारे क्लास होची नुह, धीरे धीरे ये सब क्लासेस हम एंड 8टारे एथि लगी होची कि आज हमर गोटे लॉन्ग आवर्स रा सेशन रही। तो एते लॉन्ग आवर्स रा सेशन नबा को हेले कोन हबो ना हम मानन को टिके जल्दी नबा को हबो काहे ना रेगुलर क्लासेस रहउची। तो ठीक अच्छे आउ लेट करबानी, आमे सेशन स्टार्ट कर देबा। धीरे धीरे जो माने आसीबे सेशन ने जॉइन हेबे। ओके ठीक अच्छे। तो आज जमती कि तमे एठी देखि पारछ टीचिंग एप्टीट्यूड रो जहा भी सिलेबस अछि तार पीआईक्यू एंड थियोरेटिकल बेसिस रे हमें सॉल्व करबा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कंटेक्स्ट, एजुकेशनल मैनेजमेंट, लर्नर एंड लर्निंग सिस्टम, गोल्स ऑफ एजुकेशन, वेरियस एजुकेशनल एजेंसीज, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। को स्ट्रेटजी माध्यम रे हमें छुआ मानन को पढेइले तांकर बेटर लर्निंग एनहांसमेंट हेई परिबो। ओके यस जिज्ञासा निहात भाव में रेकर्डेड क्लास मिले। रेकर्डेड तमें तुम भावुच आम रेकर्डेड क्लास देखीदेव, आम लाइव क्लास देखिबुनी ना कौन? ठीक अच्छे। आज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? ए भितरु कोटा टीचिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव हिसाब रे कहा जाए टू मेक लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट। लर्नर मानको को फैक्ट मेमोराइज करिया पई कोए ना टू ट्रांसफर नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसफर करिया को चेष्टा करे, टू गिव असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स रेगुलरली, स्टूडेंट मानको असाइनमेंट रेगुलरली दबा, ना टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ना छुआ मानको भितरे क्रिटिकल थिंकिंग एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बा एबिलिटी को डेवलप करेबा। ओके वेरी गुड। समस्ते पार्टिसिपेट करने को ट्राए करो एवं समस्ते आंसर देवा को चेष्टा करो। टू मेक लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट्स तो हबनी, आमे केवल घोषा माध्यम रे मन रखिबा, आमे लर्नर मानन को सेमिति कर दबा, सेटा त केबे नुह। टू ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, टीचर टू स्टूडेंट ट्रांसफर नॉलेज एटा कोन पिला माने ना एटा होची टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग को प्रकार टीचिंग ना एटा होची टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, टीचर सेंटर टीचिंग मेथड जो टीचर केवल कौन करती नॉलेज टा स्टूडेंट को ट्रांसफर करती। ओके 3 घंटार क्लास हम पिला माने देन कौन टू गिव असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स रेगुलरली। जदि आम डेली बेसिस रे स्टूडेंट मानक असाइनमेंट दबा ताहले से माने डिमोटिवेट हो जाबे बा पढ़िबा पई आग्रही हेबे नाही। बुझियला?
then होची to develop critical thinking and problem solving skill. This is the right answer and तम समस्तंकर ठीक अछि कि आमे कोन करबा ना ए ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव कोन ना स्टूडेंट मानक भितर क्रिटिकल थिंकिंग एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आमे डेवलप करेबा केमिति ना आमे तांगु हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दबा तांगु लर्निंग एनवायरनमेंट दबा आमे कोन कहूचे टीचिंग वर्तमान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोन ना वर्तमान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होची लर्नर सेंटर्ड कौन ना लर्नर सेंटर माने कौन लर्नर मान को स्कोप दबा तांका नीड्स तांका इंटरेस्ट तांका एबिलिटी तांका कैपेसिटी तांका लर्निंग पेस हिसाब रे हमें तांको पढिबा पई कहिबा ओके देन आउ कोन हे परिबो टीचिंग रा ऑब्जेक्टिव हमें देखिबा ना टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स आहुरी ऑब्जेक्टिव देखो नोट डाउन करो टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स तो छुआ मानकर आमे कौन करिबा ना केवल नुह क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट आज 3 आवर्स रा क्लासेस होची पिला माने कंटीन्यूअसली देखो बस तमरा कांसेप्चुअल क्लैरिटी हबार अछि किछि 3 आवर्स 5 आवर्स 2 आवर्स 1 आवर्स से कथा नाही कांसेप्चुअल क्लैरिटी हबार अछि सब जिंस बिट बाय बिट जानिबार अछि ओके तो कौन करिबार अछि ना लर्नर्स को प्रमोट करबा ऑल राउंड डेवलपमेंट केवल जे क्रिटिकल थिंकिंग बा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नुह आमे तांका भितरे रीजनिंग स्किल डिसीजन मेकिंग स्किल कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल ता सहित अफेक्शन इमोशन फीलिंग्स ए सब जिंस गुडा को डेवलप करेबा तांकर साइकोमोटर डोमेन रो डेवलप करेबा ता सहित कोन टू इंपैक्ट नॉलेज स्किल एंड वैल्यूज इफेक्टिवली टू इंपैक्ट knowledge skills and values इफेक्टिवली कौन ना प्रत्येकटी छुआंग मध्य नॉलेज स्किल एंड वैल्यूज को आमे कौन करबा इंपैक्ट करबा बा प्रमोट करबा जहाँ जहाँ स्किल्स अच्छी मोरल स्किल सोशल स्किल एथिकल स्किल स्पिरिचुअल स्किल एंड विभिन्न वैल्यूज सबू किछि आमे स्किल कहीदेली सबू से गुड़ाक वैल्यूज होची मोरल एथिकल सोशल इमोशनल वैल्यूज स्किल्स रेला लाइफ स्किल जेमिति कि एम्पैथी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप स्किल ए सबू जो गुड़ाक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दैनंदिन जीवन में प्रत्येकटी छुआ को निजर लाइफ रो ऑब्स्टेकल बा प्रॉब्लम सॉल्व करबा पई बा जहाँ भी असुविधा होची टेक्निक असुविधा को समाधान करबा पई जो जिंस गुडा हेल्पफुल होची सेटा हमें कहा माध्यम रे करबा ना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग डे टू डे लाइफ रे छुआ मानु को हमें एमिति बिल्ड अप करके गढ़िबा जहाँ फल रे तांकर सर्वांगीन विकास हेई परिबो जो थरे कि हमें नॉलेज स्किल एवं वैल्यूज को इफेक्टिवली ट्रांसफर करि परिबा ओके टू एन्श्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग आमे आउ कोन करबा ना आमे फोकस करू छ ऑब्जेक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेशन ना प्रत्येकटी छुआ जहाँ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहउची सेइतरे आमे जो कहले टीचर सेंटर्ड एठी जो कहले ओनली नॉलेज आमे कोन करछे ना ट्रांसफर करछे एटा होची टीचर सेंटर तो एथिरे कोन हुए छुआ माने ओनली पैसिवली बसंती केवल सुनंती से माने किछि बुझी पारंतिनी किछि जानि पारंतिनी तांका भेजा भितर पसु कि न पसु ए जो आमे कहले मेमोराइज फैक्ट फर्स्ट पॉइंट ता सहित कनेक्ट होची केवल घोसी क्रामिंग करी करी मने रखंती तो हमर मेन एम कोन ना आमे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग माध्यम रे करबा लर्नर सेंटर कर दवा ता द्वारा कोन ना ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल हम लर्निंग प्रोसेस रे इंक्लूड हेबे एवं तांकर एक्टिव पार्टिसिपेशन हेले ही तांकर लॉन्ग टर्म रिटेंशन बा जो डेवलपमेंट बा जो हमें कहू छ ऑल राउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट हबो तांकर कंप्रिहेंशन लेवल स्किल मैच्योरिटी ए सब जिंसर डेवलपमेंट हबो ओके टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप कोन ना टू डेवलप ए गुडा सब नोट डाउन करिबा पिला माने डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप ओके तो प्रत्येक मध्य रे प्रत्येक छुआंग मध्य रे हमें कोन करबा ना हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप क्रिएट करबा ओके ताले व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप पिला नाहांती रे पिले मु कहिथिले ना काली तम माने केही आसीबनी केही आज सेया ही हैला केही नाहांती तमे जेते बुझे दियो जहा करि दियो जहा पढ़े दियो समस्त कहबे हम रिकॉर्डिंग देखि दबु मु 8 रे उठी के आसी परछु कि नाही मो गळा मु काली भी कहिथिली सेशन फ्रूटफुल होबो जदी मो गळा न बसे
देखुच ना सकाळु माने मु एमती कहया गले रोगिणा लोक 24/7 बोधे मो देहरे रोग थाए स्टिल मु से मेडिसिन खाई सकाळु उठी आसी सेशन नवा पाई बट छुआंकर देखा नहीं कौन कहबी ठीक अच्छे तुम इच्छा तुम रेकर्डिंग देख कि लाइव सेशन देख वाओ सांगे सांगे छुआ कथा कहला बेल उड़ी गले ठीक अच्छे जो माने अच्छा अच्छा तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज माने पिला माने कौन ना आम भितर कौन डेभलप करवा इक्वालिटी फ्रीडम ता सहित समस्ते जमती क्वेश्चन रेज करि पारथुवे अवेयर थिबे अवेयरनेस ता सहित आमर कौन ना जस्टिस मनोभाव समस्त को समान न्याय इक्विटी ए सब जिनस आम सोसाइटी रे समस्त को प्रोवाइड करि पारुथिबा समस्त को समान नजर देखुवा इक्वाल अपॉर्चुनिटी समस्त लर्नर मानक आम प्रोवाइड करबा एंड सिटीजनशिप आज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया आमर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं रोल कौन से सब जिनस आम प्रत्येकटी छुआ को बुझेबा बुझेला ता सहित आमे कौन पिला सेल्फ रिजिलेंस एवं सेल्फ फोर्थ छुआ एथरु बुझिबा छुआ को कौन करबा आमे मोटिवेट करबा सो दैट से तार सेल्फ फोर्थ एवं सेल्फ रिजिलेंस कौन अछि तार ड्यूटी कौन तार रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सब जिनस टीचिंग माध्यम रे बुझिबा ओके ता सहित आमे कौन करबा ना टू फोस्टर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लर्निंग टू फोस्टर interest and motivation in learning तो कौन ना टीचिंग माध्यम रे आमे एमिति मेथड आमे एमिति स्ट्रेटजीज यूज करबा जा द्वारा कौन हबो ठीक अछि थैंक यू गणेश कौन ना टू फोस्टर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन माने आमे एज ए टीचर एई भली भाबरे मेथड यूज करबा आमे एई भली भाबरे स्किल यूज करबा आमे एई भली भाबरे टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करबा जा फले रे कौन आमे फोस्टर करि परिबा बा डेवलप करि परिबा कौन ना पिला मानक मध्य रे एई जो इंटरेस्ट कोनसी गोटे चैप्टर को पढिबा पई छुआ मानकर आग्रह मोटिवेशन उद्दीपना ए सब जिनस छुआ मानक भितरे बढ़ेबा कि कौन ना छुआटी पढ़ू एवं जानी पारू एवं इंटरेस्ट बढ़िया द्वारा लॉन्ग टर्म रिटेंशन छुआर हबो एवं कौन लाइफ टाइम पई से नॉलेज टा एप्लीकेबल हबो से रियल लाइफ रे से नॉलेज टा यूज करि परिबो ओके तो एटी कौन आमे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव मन जानले नॉट ओनली टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग तो एटा तमरा 2025 रो पीआईक्यू पिला माने एंड तुम माने करि पारुछो एटा बहुत बड़ कथा ए सब जिंस भी मन रखिता काहे कि ना केबे ऑब्जेक्टिव रे ए सब जिंस किछि भी आसी पारे ओके तो नोट डाउन करि दबो जहा 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 लिखि देली सब हमर भारत मानचित्र हे गला कोठी ओडिसा कोठी जाय कि कोन बसी गला नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following characteristics is the most important characteristics of a good teacher? ए भितर कोउटा गोटे good teacher पाई गोटे important characteristics good personality maintenance of strict discipline good knowledge of the subject ability to properly motivate the students कौन हबा पिले Which of the following characteristics is the most important characteristics of a good teacher? Okay. Yes. A के गोटे कहलानी सी कहलानी ओके बोथ सी एंड डी तो पिले ठीक अच्छी ए को छाड़ी दियो बी को छाड़ी दियो सी एंड डी को आमे आसीबा ओके तो मु कहबी एठी जो माने ऑप्शन डी कहउछंदी एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट द स्टूडेंट इज द राइट आंसर काहे के राइट आंसर एबे हमें एनालिसिस करबा गोटे टीचर रो गुड पर्सनालिटी दरकार पर्सनालिटी किंतु कौन ना पर्सनालिटी डा हमर नुह कि मोर प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमें मेंटेन करबा नाही गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट पिला माने मु एबे एठी आज ए टीचर तमरा ठिया हेची माने ओके मु तुमको कहूची कि मु तम पाखरे ठिया हेची आज ए टीचर तम माने मते सकाळे पाइले कि जत्ते बेले भी मु क्लास करूची बुझी सारा कौन कहूची बुझी सारा तापरे हेठू डिस्कशन करबा
कौन ना मु तुम पाखे ठिया हेची जेहेतु कौन पे ठिया हेची मोर गुड न सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी ओके मोर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी बोली आज ए टीचर मु आज तुम पाखे ठिया हेची काली तुमको रीजनिंग मैम पढ़ाउछन रीजनिंग काहे पढ़ाउछन काहे ना रीजनिंग रे तांकर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी बोली तो सी कौन किंतु अप्रोप्रिएट आंसर होची एटा बोर्ड कौन नौथबो तो किंतु राइट आंसर होची तमर कौन ना एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट द स्टूडेंट गुड सब्जेक्ट नॉलेज समस्तंकर थाए गुड टीचर आमे तांकू कहबानी जरा सब्जेक्ट नॉलेज सपोज मु कहूची काहे के कहूची बुझो इसु मु तम कथाटा बुझी पारुची तमे जो जिंसटा कहचा निहाती फ्रस्ट्रेटेड लागिवो जदी राइट आंसर रे हमकू भूल दिया हम ओके ठीक अछि तम माने सी करो किंतु अकॉर्डिंग टू माय आंसर एटा डी हबो काहे कि ना समस्त पाखे गुड सब्जेक्ट नॉलेज थाए जने गुड टीचर हबा पाई नाइ कि हमको सब्जेक्ट नॉलेज रो नितांत आवश्यक सब्जेक्ट नॉलेज थिले ही हमें टीचर हे परिबा तापर हमें जो गुड पर्सनालिटी बा बिहेवियर हबो सेटा रे हमें कोन ना छुआ को जो मोटिवेट करि परिबा तो एठी दीटा को हबार चांसेस 50-50 अच्छी पिला माने 50-50 दीटा कर चांसेस अच्छी बट सी जमती इश्यू कहले कि मैम बोर्ड एग्जाम हमको ऑप्शन सी देला ओके गुड सब्जेक्ट नॉलेज थिले तमे पढ़ाई परिबा नाही तम पाखरे से स्किल नथिले तमे छुआ को मोटिवेट करै परिबा नाही तो जदी हमें बोर्ड आंसर अनुसार जिबा ऑप्शन सी जदी आम हिसाब रे जिबा ऑप्शन डी नेक्स्ट जिबा कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन टीचिंग किछि कथा नहीं बेले बेले सब एग्जाम रे सया हुए एंड एग्जाम हिसाब रे हमको जिबा को भी पड़े काहे ना एग्जाम रे गोटे आंसर देथिबा आ हमें जदी न करि पारिले ताले कोन हबो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन टीचिंग द कंटेंट एंड सिलेबस द टीचर्स परफॉर्मेंस द नीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट द इवैल्यूएशन मेथड यूज बोथ थिले सुना बोथ थिले जेहेतु बोर्ड एग्जाम तमको जोटा बोर्ड ठीक होचे जमति कि इशू कहले सब्जेक्ट नॉलेज आसुची इट्स बेटर टू बीएड एग्जाम रे जदी से सब्जेक्ट नॉलेज को नउची यस ऑप्शन सी हबो तमे पछला मैम बोथ थिले परीक्षा रे जदी आउ थरे रिपीट हुए हमें कोन करबू जदी ऑप्शन सी बोर्ड नउची हमें ऑप्शन सी को ही धरि के जिबा गुड सब्जेक्ट नॉलेज बोली आमे जानी छे एटा किंतु जदी एटा बोर्ड हमको ठीक कहूची ताले हमें सेटा नै कि जिबा यस ऑप्शन सी द नीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट एब्सोल्युटली राइट ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन टीचिंग द कंटेंट एंड सिलेबस नाही एटा कोउथरे ना सब्जेक्ट सेंटर्ड ओके देन द टीचर्स परफॉर्मेंस एटा होची टीचर सेंटर देन आछि द इवैल्यूएशन मेथड यूज एटा मध्य टीचर सेंटर ओके ए गोटा को होची द नीड द इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट एटा होची लर्नर सेंटर यस मैम आपण कोटा कहउछंती मु भी सब्जेक्ट नॉलेज ऊपर जाउछि ना मु भी सब्जेक्ट नॉलेज ऊपर जाउछि तो 2 नंबर ऑप्शन सी समस्ते करेक्ट करिवो ओके देखो आंसर की रे कोन देइछि ऑप्शन तमे माने मो मुंडटा को पिटी दियो इवैल्यूएशन मेथड यूज सेटा जीवो लर्नर सेंटर्ड रे मु जानिनी भाई आंसर की कोन देइछि हला मो स्ट्रिक्टली कहूची जो जिनस ही करेक्ट तम आंसर की रे जदी कोन देइथिबो ना जो माने सी कहले जमते सी सब्जेक्ट नॉलेज देइछि मु जत्ते बुझैली से मानिलेनी डेली ए टाइम रे क्लास होनी देखो मु पिला माने बुझुची जेहेतु तमरो 1 मार्क कटुची तुमको लागिबो किंतु जो जिनसटा देखो से जमते कहले सब्जेक्ट नॉलेज नथिले प्रीवियस टा देखो प्रीवियस टा तो मो मत ऑप्शन डी अब काहे ना आरआई एग्जाम रे आर थरक पड़ीथिला आरआई एग्जाम जो एंट्रांस होची बीएड आरआई बीएड रे पड़ीथिला आरआई बीएड रे ऑप्शन डी को करेक्ट माना जाइथिला ओके
तमे कहूछ स्टेट बीएड रे तमरो ऑप्शन सी को करेक्ट माना जायथिला तो बुझुछ कि नाही तो मु ऑप्शन डी को ही कहूची कहीं ना आरआई एग्जाम जो प्रीवियस ईयर आरआई बीएड हेतिला डिटो एई क्वेश्चन टा पडिथिला एंड ऑप्शन डी ही करेक्ट हेतिला आ एटा ही मो मतरे करेक्ट काहे के कहूची तापरे 3 नंबर को जिबा पिले देखो जेते बेले कोन होउची ना मैम डी ही आंसर थिला ठीक अछि मो काहे के डी कहली सुनो मु जो जिनसटा कहली तमे बुझिया को चेष्टा करो सेते बेलटू मु डी एथि लागि कहली कि गुड सब्जेक्ट नॉलेज तमे माने एबे जदी मु कहूची कि साइंस बैकग्राउंड हेथिबो किए आर्ट्स बैकग्राउंड हेथिबो किए कॉमर्स बैकग्राउंड होइथिबो तमे जेते बेले तम कंसर्न सब्जेक्ट रे मु आज ज्योग्राफी टीचर अपॉइंट होउची मोर बैकग्राउंड आर्ट्स मु जदी काली हाई स्कूल टीचर रे अपॉइंट हेली ताले मु ज्योग्राफी टीचर रे अपॉइंट हेली माने कोन मोर सब्जेक्ट नॉलेज न थाई कि मते डाकी के आनले रे मैम आपण बहुत सुंदर देखा जाउछंती ओके तो आपण आसंतु आपण एठी रही जांतु हम स्कूल रे आपण को सुंदरता देखि के पिला बुझी जिवे कि एटा तो नुह बुझीच कि नहीं तो तमे निजे टिके बुझिया को चेष्टा करो काहे कि मु डी कहिली सब्जेक्ट नॉलेज समस्तंकर अछि आमे एठी ठिया हेचु माने मु तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड पढौछि माने टीचिंग एप्टीट्यूड रो सब्जेक्ट नॉलेज अछि बोली मु तमरो टीचर हेछि किंतु सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करेनी काहे कि तम माने एठी 176 छुआ काली जणे टीचर पढेले तमे 1000 छुआ हबो काहे कि सेटा डिफरेंस काहे कि ना मो वे ऑफ मेथड मो वे ऑफ टीचिंग मु तुमको सेति की मोटिवेट करि पारेनी मु सेति की तुमको जो जिनसटा प्रोवाइड करि पारेनी तुमको आगु को जिबा को जो जिनसटा हेल्प करि पारेनी आउ जने हेल्प करूछनी मे भी तमे मो क्लास रे एति कि आउ जण को क्लास रे सेही सेम टॉपिक रा टीचर को भी चैनल हो कोठी भी हो तमे धर ना हो काहेंगी ना सही मोटिवेशन की सही मैटर किबा सही टीचिंग मेथड तम मानन को मिली पारु नाही ओके आ जदि भी तमे कोन भाबुचो तमरो बोर्ड ऑप्शन सी दोउची तापर पुणी मते पछरे आसी सोदिबो बोर्ड ऑप्शन सी दोउची आपण भूल पढेले किंतु मो मतरे ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर बोली थरे निजे भाबो तमे अपॉइंट होउचो माने मैथ टीचर हिसाब रे तमरो सब्जेक्ट नॉलेज अछि बोली एंट्रेंस देई कि तो अपॉइंट हेला किंतु आमे समस्ते तम क्लास रे फेवरेट टीचर जने काहे कि हुंदी ना सी सेति की भलो भाबरे तमको नॉलेज टा प्रोवाइड करि पारंती बोली सी तमको नॉलेज प्रोवाइड करंती ओके नेक्स्ट चलो एटा हला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कहिले आमे लर्नर को यस 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 से 2 नंबर को छाड़ो 2 नंबर जे डी बुझुची बुझु जे सी बुझिला से ता मुंडरे रखी के बसु मु पागल हे जे डी सी बुझाई कि हमरा 22 मिनिट पळेलानी तो 3 नंबर हैला कौन ना लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कौन ना जो थिरे लर्नर कौन करे देखिबा लर्नर रही है लर्नर सेंटर्ड एक्चुअल रे लर्नर एक्टिव रोल प्ले करे लर्नर कौन करे ना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे से कौन करे लर्न करने को चेष्टा करे ओके सप्ताह रे 7 दिन क्लास होची ओके देन कौन ना लर्निंग बाय डूइंग पिले मो टिके कहूची बहुत डिस्टर्ब हो गलाडी तमे क्लास रे देखा और आंसर करो जोठी क्वेश्चन डाउट होची पचार नले मैराथन ने 10टा क्वेश्चन ने 3 घंटा पळेबो ओके काइंडली टिके सप्ताह रे केते दिन क्लास होची एटा हलानी सेटा हलानी तमे पारे भी जो डिस्कशन करि सला परे कहि परिबो मैम ए हलानी बी हबो कि सी हलानी डी हबो काइंडली टिके सुनो तापरे कुह काहे ना एमती हला बेल को मु गोटे जिंस देखि दउची पुनी आ गोटे जिंस जाउची ए 3 नंबर ही हमें अटकी जाइथिबा आ आगु को जारी परिबानी ओके तो कोन ना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लर्निंग बाय डूइंग एक्टिव लर्निंग रोल एथिरे लर्ननेस ता कोन करे ना नॉलेज कंस्ट्रक्शन करे नॉलेज कंस्ट्रक्टर केमिति छुआ निजे रही थाए ना सी केमिति नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे ना सी तार प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करके लर्नर कौन करे ना नॉलेज टा कंस्ट्रक्ट करे तार प्रायर एक्सपीरियंस बा प्रीवियस नॉलेज जो गुडा थाए से प्रीवियस नॉलेज को यूज करके से कौन करे ता सहित वर्तमान न्यू प्रेजेंट नॉलेज को मिसेकी से मीनिंग मेक करे
मु गोटे मीनिंग क्रिएट कली केमिति ना मु प्रीवियसली जहाँ जहाँ मो एनवायरनमेंट रो पढ़ी ता सहित मोर एक्जिस्टिंग नॉलेज को मिसई की कौन कली ना मु मोर वर्तमान नॉलेज टा डेवलप कली। तो एठी कौन आमे करू सेति लागि जेते बेले भी आमे कहिचे लेसन प्लान आमे करू आमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव करू से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टा लर्नर सेंटर्ड टीचर केमिति करंती क्लासरूम रे ना सेइथरे जो ऑब्जेक्टिव थिबो सेटा स्टूडेंट रा नीड स्टूडेंट रा इंटरेस्ट तार एबिलिटीज आ मोटिवेशनल लेवल को देखि के ही टीचर सही ऑब्जेक्टिव बनांती। ताहले एठी टीचर को रोल प्ले करंती ना टीचर रोल कोन टीचर एठी पैसिव आउ कोन ना टीचर एठी एज ए गाइड एज ए फैसिलिटेटर काम करूथांदी जोठी पिल्ला को एक्स्ट्रा हेल्प बा स्कैफोल्डिंग बा टेम्पररी हेल्प दरकार से स्टेज रे टीचर छुआ को हेल्प करिथांदी लर्नर सेंटर्ड मेथड रे। ओके देन ताले कोन होची ए लर्नर सेंटर मेथड जदी एते इफेक्टिव ताले यार लाकुना कोन रहिछि पिला माने एथि लागि जने ट्रेन टीचर दरकार तो यार लाकुना कोन देखिबा ना एथि पई जने ट्रेन टीचर दरकार ता सहित कोन सबु छुआ सबु लेवल ले लर्नर सेंटर मेथड रे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रे निजे एक्सपेरिमेंट करी पढ़ी पारिबे नाही मे भी तांका एक्सपेरिमेंट रे कोठी भूल थाई पारे आ एटा कोन ना लार्ज क्लासरूम साइज पई जम्मा भी इफेक्टिव नुह आमे लर्नर सेंटर मेथड रे आमे कहि पारिबानी आमे गोटे लार्ज क्लासरूम साइज रे एई भली मेथड रे छुआ मानन को पढ़ाई पारिबा। क्लियर लर्नर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट when student in a class display varying levels of ability विभिन्न प्रकार ability अछि which of the following approach is most appropriate to solve this disparity तो ए जो डिवीजन बा disparity बा विभेदता बा भिन्नता को कैटर करिवा पई को अप्रोच को हमें अवलंबन करिवा। ओके ना फोकस स्लोली ऑन द टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट मैक्सिमाइज देयर लर्निंग तो जो माने टॉप परफॉर्मेंस करूछंदी आमे केवल एज अ टीचर से पिला मानन को फोकस करिवा ना providing differentiated instruction that caters to students individual learning needs आमे विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन दबा जो गुडा का कौन करिबा ना स्टूडेंट मानकर डिफरेंट नीड्स को कैटर करि परिबा ना यूज ओनली वन टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल स्टूडेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी तो गोटी ही सिंगल मेथड यूज करिबा गोटे कंसिस्टेंसी मेंटेन करिबा पई ना डी असाइन मोर असाइनमेंट्स टू लर्नर्स हु लैगिंग बिहाइंड जो माने बिहाइंड रे लैग करछन्ती से मानो कोन करिया पिला माने ओके आंसर दिया समझते वेरी गुड तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी काहे गेला पिले ना एठी हमें देखिबा एठी हमें देखिबा कि व्हेन स्टूडेंट्स इन ए क्लास डिस्प्ले varying levels of ability विभिन्न प्रकार लेवल एबिलिटी देखौछंदी तांकर डिफरेंट एबिलिटी अछि which of the following approach is most appropriate to solve disparity से जो विभिन्नता मोर गोटे एबिलिटी आ जनकर मु धर स्लो लर्नर तो हमें धर हाई इंटेलेक्चुअल लेवल लर्नर अच्छ तो आम भितर जो डिफरेंशिएशन ता अछि से डिफरेंशिएशन को हमें केमिति कैटर करि परिबा ना से डिफरेंशिएशन को कैटर करि परिबा जेतेबेले हमें प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दैट कैटर्स टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स तो बेसिकली कहबो गले एटा गोटे इंक्लूसिव एजुकेशन ना अप्रोच हमें कहि परिबा जेमते इंक्लूसिव एजुकेशन ने आईपी दिया जाउची आईपी कोन ना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान तो जो आईपी हमें दौचे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान काहेकि ना एठी एज ए टीचर हमर रेस्पोंसिबिलिटी रहउची हमें असेस करबा डायग्नोज करबा कोन ना हमें डायग्नोज करबा ईच सिंगल लर्नर्स माननकु एवं सेमानकर डेवलपमेंट केमिति हेई परिबो ता प्रति हमें फोकस करबा एवं तांकु हमें लर्निंग प्रोवाइड करबा अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने जदी
मु चाहूचे डायग्नोस कला परे मु देखली जने वीक अछि मु सेठी इमीडिएटली से पिला को रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करिबी जो टीचिंग ता ताकू नेसेसरी दरकार नॉर्मल छुआंग सहित से मिसिकरी से लर्निंग पेस रे तार लर्निंग ताकू एनहांसमेंट करि पारिबो ओके। नेक्स्ट 5 नंबर आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द एसेंशियल एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। आमे कोथिरे गोटे इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबा एडहेरेंस टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर सेंट्रिक अप्रोच लर्नर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन मिनिमम टीचर इन्वॉल्वमेंट। आंसर दिए समझते वेरी गुड बहुत बढ़िया पिला माने जो माने सेशन ने अच्छा टिके सेशन को लाइक कर दियो एटलीस्ट एंड पिला मानन को भीतर शेयर करो सो दैट बहुत पिला का पाखरे सेशन ता पहुंची पारू। तो ऑप्शन सी लर्नर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन एटा लर्नर एंगेजमेंट आ पार्टिसिपेशन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एबे हमें प्रीवियसली पढिले कोन ना हमें प्रीवियसली पढिथिले गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ओके एंड गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो बेसिकली जो टीचर सेंटर्ड आ गोटे हला लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड रे कोन हुए ना जो ट्रेडिशनल मेथड आ एटा हला मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। तो एथरे कोन हमें केवल नॉलेज टा को ट्रांसफॉर्म कर दे थाउ नॉलेज कोन करू ना ट्रांसफर हैला किंतु एथरे कोन नॉलेज कंस्ट्रक्शन हैला। तो कौन आमे फॉलो करू छेबे नॉलेज कंस्ट्रक्शन को नॉलेज कंस्ट्रक्शन ने आमे कौन करि थाउ ना लर्नर रो एंगेजमेंट को देखि थाउ और लर्नर का पार्टिसिपेशन को देखि थाउ। जदि आमे कहबा टीचर सेंटर्ड रे टीचर होउछंदी सोल रेस्पोंसिबल फॉर नॉलेज ट्रांसमिशन माने मोर नॉलेज मु तम मानन को शेयर करिवि केवल लेक्चर मेथड रे तमे बसिबो केवल तमे सुनिबो एवं तमे किछि रेस्पॉन्स दबो नाही तमरा किछि हा जा बा जाइनी तमे ना क्वेश्चन करि परिबो ना तमे किछि निज अनुसार कहि परिबो तमरो कोनोसी अधिकार नाही मु जहा कहिबी मु केवल सोल रेस्पोंसिबल मो टीचिंग पई मु जहा बुझेबी से यही ठीक सेटा होछि कोन ना टीचर सेंटर्ड मेथड। तो ई टीचर सेंटर्ड मेथड ता ठीक भाबरे काम दबो नाही ओके। देन कोन लर्नर सेंटर्ड मेथड रे हमें कहले नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो थरे कि नॉलेज एक्टिव पार्टिसिपेंट हिसाब रे काम करिवो तार एक्टिव पार्टिसिपेशन रहइबो से निजे से एक्टिविटी रे निजे को एंगेज करिवो एवं तार पार्टिसिपेशन लेवल ता तार इंटरेस्ट तार मोटिवेशन सब बढ़िबो। जेते बेले छुआटा निजे लर्निंग एनवायरनमेंट रे रही कि निजर प्रीवियस नॉलेज को यूज करके गोटे नुआ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करूची बा डेवलप करूची सेते बेले से बहुत इंटरेस्टिंगली क्यूरियोसिटी है कि क्यूरियस है कि कोन करूची निजे एक्टिविटी रे निज को एंगेज करूची आ कोन करूची ना पढिबारे लागुची। जेते बेले मु मो निज को से कामटा रे निज स्वतः प्रभुत इच्छा रे एंगेज करे दोची ताले सेटा कोन हबो ना लर्निंग ता निहाती भाबरे इफेक्टिव हबो। तो आज ए टीचर आमे सबु बेले मार्क करबा कि आमे एंश्योर करबा केमिति ना ईच एंड एवरी क्लासरूम रे छुआ मानकर एक्टिव एंगेजमेंट एवं पार्टिसिपेशन से लर्निंग रे रहू सो दैट कोन ना लर्निंग एनवायरनमेंट ता इफेक्टिव हेई पारिबो ओके बुझियला। नेक्स्ट आसला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट रो प्राइमरी गोल कोन to limit learner creativity, to ensure students follow every rule, to maintain proper order and maximize learning opportunities, and to assign extra work for learners. मु भाबुची ए क्लास कला परे तमर जहा डर अछि जहा भय अछि कि मु केते आनी परिबी केते न आनी परिबी ए जिनसटा तम माने जानी परिबो। यस बहुत बढ़िया ओडिया अनुचिंता
Very good. Option C कौन ना to maintain proper order and maximize learning opportunities. तो हम कौन पचारा which among the following is the primary goal of classroom management? To limit learner creativity. आमे एबे बा पढ़िले सेमान को एंगेज करेबा सेमानकर पार्टिसिपेशन देखिबा सो दैट लर्निंग टा इफेक्टिव हे परिबो ताले सेमानकर जो क्रिएटिविटी बा न्यूनेस बा यूनिकनेस टाको आमे केमिति लिमिट करि परिबा सेमिति लिमिट कले केबे भी इफेक्टिव टीचिंग हेई परिबोनी टू एन्श्योर स्टूडेंट्स फॉलो एवरी रूल सेमिति किछि गारंटी नाही स्टूडेंट को जोटा भलो लागिला से सेटा ही फॉलो करिवे जोटा भलो न लागिला से स्किप करिवे ओके नेक्स्ट कोन ना टू असाइन एक्स्ट्रा वर्क फॉर लर्नर्स जदि हमें एक्स्ट्रा वर्क दे दबा क्लासरूम मैनेजमेंट हे जबो से तो घरे करबो एक्स्ट्रा वर्क रे क्लासरूम मैनेजमेंट केमिति हो ना टू मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर एंड मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो कौन प्रॉपर ऑर्डर देखो फास्ट है हमें जो कहूचे कि हमें क्लासरूम टीचिंग रे कौन फॉलो करूचे 5E मेथड एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट देन कौन ना इवैल्यूएट तो एई भली भाबरे आमे 5टा 5E मेथड यूज करूचे गोटे लेसन प्लानिंग समय रे बा आज ए टीचर कौन करूचे ना आमे जेते बेले हमरो लेसन टा पिला मानकू प्रोवाइड करूचे बा दोउचे ओके 5टा फेज रे एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट इवैल्यूएट तो वर्तमान मॉडर्न टीचिंग बा जोटा हमें कहूजे लर्नर सेंटर्ड मेथड रे हमें जेते छुआ को पढ़ाऊचे आमे 5टा मेथड दे क्लास में अतिक्रम करूचे कौन पाई ना क्लासरूम रो गोटे प्रॉपर मैनेजमेंट बा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर पाई तो फास्ट हमें कौन करूचे गोटे लेसन प्लान बनाऊचे कि काली मु ए टॉपिक टा पढ़ेबी धर मु काली पढ़ेबा को जाउची मोगल साम्राज्य किंबा मु पढ़ेबी जंगल सुरक्षा विषय रे तो मु पिला मानन को पचारिबी पिला माने एंगेज केमिति करिबी ना फास्ट मु हसी हसी श्रेणी गृह को जिबी पिला माने पार्टी करूछंती कि चुप होइसंती बसिबी तो तापरे मु गोटे हसी कि पिला मानन को टिके साइलेंट हबा पई कहिबी देन अटेंडेंस टा नेबी अटेंडेंस नै सला पर मु कोन करबी पिला माने चलो आज हमें किछि गप्पीबा कहि कि हमें स्टार्ट करेबा काहेकि ना गप्पीबा माध्यम रे हमें छुआ को एंगेज करेबा केमिति ना मु पचारिबी जदी मु जंगल सुरक्षा पढौछि पिले तमे जो फल केबे खाइछ विभिन्न प्रकार फल किछ गोटे फूलर ना कहबा पिले झुणा देखिछ झुणा झुणा तमे कोठु पाओ से तापर कहबे झुणा एठु पाओ एठु केमति पाओ तम एरिया रे कोन कोन अछि को जगह रु तमे कलेक्ट करो केंदु पत्र तमे कोठु पाओ तो ए सब जिंस कही पिला को को आडू को आनिबो ना जंगल आडू को अच्छा जंगल तमे जो काटी दउछ जंगल क्षय हबो कि नाही तापर एठु छुआ कि हां कहबो कि नाही कहबो नाही गछ बढ़ी जिवो तापर हमें कौन करबा ताले तमे कौन भाबुछ आज तमरो को विषय वस्तु हमें पढ़ेबा छुआ ऑटोमेटिकली अधा छुआ कहबे जंगल सुरक्षा आउ के कंफ्यूजन हे कि रहिले तो कौन सेठु हमें ब्लैक बोर्ड फिल अप करबा यस आज हमें पिला माने जंगल सुरक्षा विषय पढ़िबा कहि कि सब्जेक्ट जगह रे फिल अप कले ओके सल्ला तापर एंगेज हे गले एक्सप्लोर मु तांको पचारबी जदी एटा जंगल सुरक्षा हमें न करबा ताले कोन हबो तमे कौन भाबुछ तमे से जगह थिले कौन करथांदा किछि वर्कशीट देई कि हो किछि ओरली हो मु पचारिबी माने कोन थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन चिंता और प्रत्याशा मूलक प्रश्न ओके तो कौन ना चिंता और प्रत्याशा मूलक प्रश्न जेते बेले पचारिली तो चिंता और प्रत्याशा मूलक प्रश्न पचारिबा द्वारा कौन हबो ना चिंता और प्रत्याशा मूलक प्रश्न पचारि द्वारा सी तांकर क्रिटिकल थिंकिंग करिवे मुंडरे भाबिबा को लागिले एक्सप्लोर करिया को लागिले हां ए जिंसटा केमती थिला न हेतिले कोन हेई थांदा देन आसिला से माने जहा आंसर कहि साइले मु पाइ सरिया परे मु जंगल सुरक्षा विषय जहा कहिबा को चाहूची सेटा को एक्सप्लेन करबी देन कोन से जिंस को समराइज करबा कोन आज हमें पढिले किछि क्वेश्चंस पचारिबा ताको आउट के एलाबोरेटली ताको सिंथेसाइज करके पिला माने को बतेबा लास्ट फेज ला इवैल्यूएशन जो थरे के विषय वस्तु पिला माने केते बुझिले आमे प्रीवियसली किछि क्वेश्चन लेखि के आनी थिबा तो आमे कोन करबा ना से क्वेश्चन गुडा को ब्लैक बोर्ड रे पिला मानन को देखै कि कहबा पिला माने तमे आंसर दबा पई चेष्टा करो ओके तापरे पिला माने धीरे धीरे आंसर देबे देला परे आमे जानिबा केते दूर बुझिसंदी कि न बुझिसंदी तो ए जो 5E रे पढेइले एई तक हमकु लागिला नॉर्मल प्रोसीजर ना ता भितरे मध्ये आमे डिसाइड करथिबा आजी आमे को मेथड रे जंगल सुरक्षा को पढेबा मु केवल लेक्चर मेथड रे पढे कि निजे निजे कहिबिनी मु किछि एक्टिविटी करबी
मु ग्रुप वर्क रे पढ़ेबी ना मु पिला मानकु यू सेफ करके तमे गोटे दल गठन करिवो ता भितर पिलांकु तो मु आज यू सेफ रे पढ़ेबी ना गोलाकार करके पढ़ेबी मु केमिति पढ़ेबी सेटा होची क्लासरूम मैनेजमेंट कि मु जदी जंगल सुरक्षा विषय पढ़ेबा को जाउची ताले मु को मेथड यूज करके पढ़ेइले मो छुआ माने जंगल सुरक्षा बुझी परिबे ना मु स्टोरी टेलिंग रे पढ़ेबी ओके बुझी पारलो तो से सब जिनस मते डिसाइड करिवार अछि मु स्टोरी टेलिंग रे पढ़ेइबी ना मु एक्टिविटी मेथड रे पढ़ेइबी ना मु तम मानक सहित डिस्कस करिवि क्वेश्चन आंसर रे पढ़ेइबी ना मु ग्रुप वर्क करके पढ़ेइबी ग्रुप असाइनमेंट दे देबी मु केमिति पढ़ेइबी सो दैट कोन एई जो मेथड मु यूज करली एई मेथड यूज करिवा द्वारा ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड कोन करिवे ना क्लासरूम रे निजको एंगेज करके रखिबे जहा फल रे कोन ना क्लासरूम डिसिप्लिन ता मेंटेन हबो फर्स्ट क्लासरूम डिसिप्लिन देन कोन छुआ मानकर इंटरेस्ट बढ़िबो निजे निजे जिंस गुडा को एक्सप्लोर करबा पई छुआ माने मोटिवेट हेबे नुआ नुआ जिंस जानिबा पई क्यूरियस हेबे से माने इंटरेस्ट नेले कोन ना लॉन्ग टर्म से मानकर रिटेंशन हबो क्लासरूम रे सब जिंस बैलेंस हबो एवं कोन ना मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माने अधिक रु अधिक छुआ मानकु लर्निंग अपॉर्चुनिटी बा सुजोग प्रदान करा जिवो जहा फल रे सबु छुआ जेते मात्रा रो निजको एक्सप्लोर करबा को चाहुतबे निजको आगो को नबा को चाहुतबे से माने नै पारिबे बुझियला क्लियर एवरीवन बुझी होची ना तमन को डिफिकल्ट लागोची एक्चुअली मु बहुत जिंस डीपली बुझौची सो दैट जो माने जानि नथिबा बे बुझी पारिबो एंड जो माने जानिचा से मानकर बे क्लियर हे जिवो तो जदि भी कोठी कंफ्यूजन होउथबो मते कहिबो काहे कि ना देखो मु बुझौची डज नॉट मीन कि तमे बुझी जिवो किछि किछि जगह रे भी प्रॉब्लम रही पारे मते ओपनली कहिबो नेक्स्ट हला कोन ना कोनिन्स विटनेस कांसेप्ट व्हिच इज क्रिटिकल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट refers to a teacher's ability to teach without any disciplinary methods na ensure always for what is happening in the classroom without having to look directly at students na freedom to all students to manage their own behavior without teacher intervention na focus more attention on students who are misbehaving okay कौन हबो देखो C ओके B सॉरी B कहलेनी ओके वेरी गुड जो माने ऑप्शन बी कहउछ मु कहबी से कोन कहला कोनिन्स विटनेस कांसेप्ट व्हिच इज क्रिटिकल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट एटा क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिटिकल रिफर्स टू टीचर्स एबिलिटी टू कोन टीचर एबिलिटी को रिफर करे कोन ना टीच विदाउट एनी डिसिप्लिन मेथड कौन से डिसिप्लिन मेथड पढ़ेबो ना फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट्स टू मैनेज देयर ओन बिहेवियर विदाउट टीचर इंटरवेंशन से टीचर एबिलिटी पचारि छिबा फोकस मोर अटेंशन ऑन स्टूडेंट्स हु आर मिसबिहेविंग ना एटा वो एंश्योर ऑलवेज फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम विदाउट हैविंग टू लुक डायरेक्टली एट स्टूडेंट से डायरेक्ट देखिबो क्लासरूम रे कोन होची स्टूडेंट आडे जिबा जिबी नाही मु देखिबे कि क्लासरूम रे मोरो कोन जिंसटा होची ओके कोनिन्स होउछंती जणे ऑथर जेमिति कि एजुकेशनल ऑथर आमे जानिचे भाइगर्स्की हेले पियाजेट हेले किंबा स्किनर हेले किंबा पावलोव हेले बहुत सारा ऑथर अछंती तो सेमिति कोनिन हेले जणे ऑथर जे कि देइछंती कोन ना विथ इटनेस अप्रोच जोथिरे से कहिछंती एटा होची गोटे टीचर्स एबिलिटी जे कि कांस्टेंटली आवर थांती ओके ए जो विटनेस कांसेप्ट माने इट इज ए टीचर्स ability who always aware of classroom activity जे के सब बेले aware थांती कि about all classroom activity मने रखि था ये अप्रोच टा classroom activity एवं immediately से कौन करंती action नियंती
से क्लास रे कौन होउछि कौन न होउछि कौन पई होउछि कौन न होउछि सब जिंस को सी फोकस करि थांदी एवं प्रॉम्प्टली संगे संगे एक्शन नै थांदी एवं हेल्प्स करंती कौन ना प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ए टीचर रो एबिलिटी ता कौन हेल्पफुल हुए ना प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर एंड क्रिएट इफेक्टिव मैनेजमेंट क्लासरूम। तो कौन ना ये जो वीकनेस अप्रोच कांसेप्ट रहउची एटा होची गोटे टीचर्स रा एबिलिटी जे कि ऑलवेज अवेयर थांदी ऑल द क्लासरूम एक्टिविटीज कौन क्लासरूम में होउची कौन क्लासरूम में होउनी एवं से संगे संगे इमीडिएटली एक्शन नै थांदी कौन ना जो मिसकंडक्ट बा मिसबिहेवियर एक्टिविटी होउची से सब मिसबिहेवियर एक्टिविटी को हमें को वे रे प्रिवेंट करि परिबा केमिति हमें इफेक्टिवली क्लासरूम मैनेजमेंट करि परिबा। ओके नेक्स्ट देखो students learning occurs when principal is vigilant, there is active teaching, students are made active, students are active, sorry parents are active कोटा हबो BCC बी किए दोची अच्छा जो माने बी दोच से माने गोटे जोक मु एबे एक्टिवली पढ़ौची मु पूरा जोरदार एक्टिव अछि भाई तमे माने काई एठी ना तमे माने काई एठी ना तमे माने काई एक्टिव ना मु तो पूरा एक्टिवली जोरदार चिल्ले चिल्ले ए गळाटा तो पूरा गोटे हे जाई जो मेंढा कर्कश स्वर हेया सेइथिरे पढ़ौची तमे माने कोम भाई एक्टिव ना। यस ऑप्शन सी स्टूडेंट्स आर मेड एक्टिव। तो कौन ना स्टूडेंट्स लर्निंग ऑकर्स छुआ माने लर्निंग टा सेते बेले पढ़िबे जेते बेले से माने एक्टिवली एंगेज हेबे ईच एंड एवरी क्लासरूम एक्टिविटीज रे। ओके तो क्लासरूम रे जहाँ भी एक्टिविटी होउची जे पर्यंत से माने निजे एंगेज हेई नाहंदी से पर्यंत कौन ना क्लासरूम टीचिंग टा हेई परिबो नाही। ओके तो देयर इज अ प्रिंसिपल इज विजिलेंट सेथरे किछ मतलब नै देयर इज एक्टिव टीचिंग टीचर जेते एक्टिवली पढ़ाउ थाउ तमरो मूड नाही माने टीचर बाडे की कहले भी केही आसी परिबो नाही टीचर बाडे ही कहबो ए तू आ हां मां बाडौथबो ए चल 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 पढ़िबु चल कोन मु एंदी पढ़िथिबी इंदी घुमौथिबी मु तो मते मो बहु जतले कहे मु सेतले कहे मु पाठ पढ़िबिनी तू काहे के एते चिंता करूछु ना पेरेंट्स आर एक्टिव हेले किछ होबनी आम घरे तो पेरेंट्स एक्टिव थानी मते कहंती तू केतबेले पाठ पढुछु हमें जानिनु मु परीक्षा दे साला परे मो बापा बसी हिसाब करंती तू 50 रखी दे 50 रखी परिबुनी तू 100 रु 50 रखी दे आम पई बहुत सबु बेले मो बाबा एमती हिसाब करंती मो 10th बोर्ड एग्जाम सरले तू 50 रखी देबू तो 100 रु न 40 रख नहले 30 रखी पास हो जा फाइनली पास हो जब तो फेल होना माने मो पेरेंट्स कर एक्टिव माने मोर एक्टिविटी ऊपर एते भरोसा थिला तो मु सेटा कहूची समस्त कर सेंदी पेरेंट्स एक्टिव हेले किछि नै सी सब बेले एक्टिव थानी मो क्वेश्चन पेपर से स्क्रॉल करथुवे परीक्षा रे को क्वेश्चन आसी छि केमिदिका क्वेश्चन आसी क्वेश्चन देखु देखु तांकर भरोसा आसी जाय कि परीक्षाटा मोर खराब हेइथिबो मु पछे के जहा करि थाए तो पेरेंट्स एक्टिव रे किछि नाही प्रिंसिपल रे किछि नाही एक्टिव टीचिंग रे किछि नाही मु जेते एक्टिवली पढ़ाए कि जे कोनोसे टीचर पृथ्वी रा जोठी भी एक्टिवली पढ़ांतु आम एक्टिविटी रे किछि नाही जे पर्यंत स्टूडेंट माने मोटिवेट हे नांदी से माने एक्टिवली निज को एनर्जाइज करि नांदी निजर इंटरेस्ट आ एबिलिटी आसीनी। ओके तो सेही जिंस रे प्रॉब्लम होई थाए। सत्य प्रकाश पचालेनी मैम आपण 10th मार्क केते बाबू चाकरी खंडे मिलू मोर 86% थिला 10th रे हिसाब कर दियो 86% थिला एते भी पंडित नुह आमे होछु मिडिल वाला। नेक्स्ट देखिबा पिले ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर assigning from experience perception learning motivation interest
कोटा describe करे change in individual behavior assigning from experience, perception, learning, motivation and interest. Very good. कौन ना लर्निंग लर्निंग कहीं हम तो लर्निंग कहीं हम पिला माने देखो लर्निंग इज द गोटे डेफिनेशन लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर तो से कौन कही लर्निंग टा होची रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर माने कौन केमिति ना थ्रू आवर एक्सपीरियंस आमे हम अनुभूति द्वारा जो ज्ञानटा पाई थाउ ता द्वारा आमे हमर व्यवहार रे दैनंदिन जीवन में परिवर्तन आनी थाउ हमर व्यवहार रे आमे मॉडिफिकेशन आनी थाउ केमिति ना फॉर एग्जांपल जेमिति कि आमे कहिबा कौन ना गोटे छुआटे जलंता निया को हाथ नहीं जाउची बा आंगुठी नहीं जाउची बाजी गला ताऊ कष्ट होला सांग सांग से रिफ्लेक्शन द्वारा पछ को आंगुठी आनी छेरी से फुणी नेला फुणी आनुची एमिते जते बेले रिपीटेड एक्शन होउची तो सी तार मल्टीपल टाइम रो अटेम्प्ट आउ एक्सपीरियंस द्वारा लर्न करी जाउची कि एटा होउची गोटे जलंता निया मु जदी एमितिका जागा को बा एमितिका जिंस को मोर हाथ नउची ताले कोन हबो निहाती बाबरे मोर हाथटा कौन हम पड़ी जीव से लगे से कौन कर गोटे लर्न कला बा शिक्षा पाइला सारा जीवन पर से जलंता निया ता हाथ केबे देखैब नाही तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस ओके नेक्स्ट होची कौन ना द एआईसीटी रेगुलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन एग्रीकल्चरल एजुकेशन वेरी गुड ऑप्शन सी तो एआईसीटी फुल फॉर्म कौन फुल फॉर्म मध्ये बने रखता ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एजा केबे एस्टैब्लिश हेतिला फास्ट ना 1945 एवं सी रेगुलेटरी बॉडी हिसाब रे पार्लियामेंट एक्ट द्वारा केबे हेतिला ना एटा रेगुलेटरी बॉडी द्वारा से केबे हेतिला ना 1987 ने कोन हेतिला गोटे रेगुलेटरी एक्ट एआईसीटी पई पास हेतिला तो से कोन पई फोकस करतला ना ऑल इंडिया लेवल ले टेक्निकल एवं मैनेजमेंट एजुकेशन नो एनहांसमेंट केमिति हेई पारिबो ओके ये स्टैट्यूटरी बॉडी हिसाब रे केबे हेतिला ये स्टैट्यूटरी बॉडी हेतिला 1987 रे स्टैट्यूटरी बॉडी बाय इंडियन गवर्नमेंट से हेतिला 1987 मसिया रे 1945 मसिया रे एटा फर्स्ट स्टार्टअप हेतिला ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये कौन फॉलो करी थाए ना टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन बा वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया लेवल ओके आउ कौन काम थाए कौन ना टेक्निकल लेवल ले क्वालिटी एजुकेशन केमिति करि परिबो क्वालिटी एजुकेशन ऑल इंडिया लेवल ले टेक्निकल इंस्टीट्यूशन केमिति बिल्ड अप हेई परिबो एवं आमे जहा कौन करूचे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमरो एस्टैब्लिश करूते एआईसीटी रा अप्रूवल दरकार जदी एआईसीटी रा अप्रूवल से टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पई नाही जदी एनसीटी रा अप्रूवल नथिले तम बीएड रा कोनसी वैलिड नाही कोनसी कॉलेज रा सेही बळी बाबरे एआईसीटी रा अप्रूवल दरकार आमे गोटे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करिबा पई नेक्स्ट बा तो 11 नंबर व्हेन स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रीक्वेंटली ऑफ टैक्स ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज द टीचर शुड सेठी टीचर कौन करबा दरकार गोटे ग्रुप एक्टिविटीज से माने ऑफ टैक्स रहउचंदी अलाउ ऑल स्टूडेंट टू सोशलाइज ड्यूरिंग ग्रुप फॉर
to keep them comfortable सेमानंकु कंफर्टेबल करिया पई समस्त को पार्टिसिपेट सोशलाइज हबा पई कहउचंदी ना रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज ओके ठीक अछि and focus more on direct instruction assign all tasks or individual work to avoid distraction now use group roles and provide clear instruction to ensure accountability within each group कौन हबा ओके 11 नंबर बी 11 नंबर ए 11 नंबर सी 11 नंबर डी कोटा हबो कोटा बेसी आंसर दोछ बी हबो ऑफ टैक्स माने कोन फर्स्ट कुह ऑफ टैक्स माने कोन What do you mean by off tax? माने ऑफ टैक्स माने होची जेतेबेले स्टूडेंट माने नॉट फोकस्ड से माने गोटे ग्रुप एक्टिविटीज दिया हेचे से ग्रुप एक्टिविटीज रे फोकस करू नाहंदी काहे ना आमे जेतेबेले ग्रुप एक्टिविटीज करी थाउ आमे कोन करी थाउ पिला माने ऑफ टैक्स माने होची ग्रुप एक्टिविटीज रे जदी फ्रीक्वेंटली बार बार पिला माने फोकस करू नाहंती ताहाले आमे कोन करिबा ना ग्रुप टैक्स रा माने हैला आमे गोटे 5 जन को नै कि 8 जन को नै कि 10 जन को नै कि गोटे ग्रुप करिचे सेही ग्रुप रे कोन ना जन को लीडर बनेचे आ समस्त कोऑपरेटिव वे रे कोलैबोरेटिव वे रे लर्निंग ता डेवलप करियो किंतु आमे देखुचे सिए तो लीडर हेची सिए तो सब कहइबो सिए तो सब करबो सिए तो जानिची है मोर के पार्टिसिपेट करछे मोर के फोकस करछे ए गुडा मो द्वारा हबनी ए चित्र फित्र हबनी मु एटा करि परबिनी मु सेटा करि परबिनी मु जदी भाबी कि रहउची से जगह रे कोन आमे रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज एंड फोकस मोर ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भूल आमे ग्रुप एक्टिविटीज को डायरेक्ट रिड्यूस कर देबा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे देबा एटा केमथि होबा अलाउ ऑल स्टूडेंट टू सोशलाइज ड्यूरिंग ग्रुप वर्क टू कीप देम कंफर्टेबल ग्रुप वर्क रे काहा को कंफर्टेबल करबो पुनी काहा को अलाउ करबो समस्त तो ऑलरेडी ग्रुप वर्क रे अछंदी ना सोशलाइज पुनी केमथि करबो असाइन ऑल टास्क एज इंडिविजुअल और टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन समस्त को इंडिविजुअल वर्क दबा डिस्ट्रक्शन हो केमिति तमे इंडिविजुअल वर्क देले डिस्ट्रक्शन टा दूर होई जिवो डी कहला यूज ग्रुप रोल्स एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी विद इन ईच ग्रुप एटा हबो राइट आंसर कि आमे कोन करबा ना ग्रुप एक्टिविटीज करबा गोटे 5 जन को नै कि जदी ग्रुप बनेले तो नंबर 1 नंबर 2 3 4 एंड 5 तो समस्त को आमे असाइन करबा तांकर ग्रुप रोल जणे जदी मु एना कहबी व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट तमे क्लासरूम मैनेजमेंट ऊपर गोटे ग्रुप वर्क कर माने कोन डिस्कशन कर मु 1 को कहबी क्लासरूम मैनेजमेंट कोन तू लेखे मु 2 को कहबी तू कोन ना क्लासरूम रे केमिति मैनेज करबू को प्रोसीजर को मेथड यूज करबू लेखे 3 को कहबी टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट रो दायित्व तोर 4 को कहबी जदि क्लासरूम रे डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होची सेही जगह रे एज ए टीचर तू कोन करबू सेही दायित्व तोर 5 नंबर को कहबी ओवरऑल सब जिंस को समराइज करके तू कहबू केमिति समराइज करबू समस्त डाटा कलेक्ट करि साला पर सेटा दायित्व होची तोर कोन ना मु यूज कली ग्रुप रोल्स एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन समस्त को देली एंश्योर अकाउंटेबिलिटी विद इन ईच ग्रुप प्रत्येक ग्रुप रे निज निजर काम पई से माने निजे अकाउंटेबल रहिबे तांकर टॉपिक हैला क्लासरूम मैनेजमेंट किंतु समस्त को असाइन करा गला ईच रोल कि तमरो रोल कोन एवं सीए निजर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी पई जदि ग्रुप रे क्लासरूम मैनेजमेंट रे किछि भी प्रॉब्लम हैला ताले ईच सिंगल इंडिविजुअल रिस्पांसिबल रहिबे जे मीनिंग भूल कहि थाउ कि जे टाइप्स भूल कहि थाउ जे प्रोसीजर भूल कहि थाउ ओके बुझियला बलसे बुझिबा को ट्राई करो आमे कोन करबा ग्रुप रोल समस्त को दे दो कि नंबर 1 मीनिंग 2 प्रोसेस 3 टाइप्स 4 डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर केमिति मैनेज करबा 5th से कंक्लूजन दबो तो आमे जदी समस्त को असाइन करि देले ताहाले से माने रेस्पोंसिबल बा अकाउंटेबल रही पारिबे ओके नेक्स्ट now what is the best way for the teacher to handle a classroom while students are frequently disruptive and preventing other from learning okay
ताले एठी टीचर रोल कौन रहुची ऑप्शन ए असाइन एक्स्ट्रा असाइनमेंट टू स्टूडेंट हु आर डिस्टर्बिंग जो माने डिस्टर्ब करछुनी तांको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दबा ना बी allow students to continue disruptive behavior in order to avoid confirmation ना अवॉइड कर देगी सेमानंगो सेमाने जहा कंटिन्यू करछन तांको अलाउ कर दवा establish clear cut rules and expectation while providing consistent positive reinforcement for exhibiting good behavior ना D use punitive measures such as detention for all detersive वाओ जोटा तो बड़ा हैला जय बड़ा ऑप्शन हमर जय जय बड़ा ऑप्शन की वेरी गुड ऑप्शन सी ना कौन एस्टाब्लिश क्लियर कट रूल एंड एक्सपेक्टेशन जदि छुआ माने किछि क्लासरूम रे फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब करूछन्ती एवं अन्य मानकु प्रिवेंट करूछन्ती क्लासरूम लर्निंग रे तो कौन है ना व्हाट इज द बेस्ट वे ना आमे कौन करबा जेते बेले क्लासरूम रे आमे कही डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर करूछन एवं अन्य मानकु प्रिवेंट करूछन आज ए टीचर सेते बेले आमे कौन करबा कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्लासरूम लर्निंग समय रे केमिति बसिबा दरकार कौन करबा दरकार पढ़ा समय रे कौन एक्टिविटी करबा दरकार सबु जिंसरा आमे गोटे क्लियर कट रूल बाहर करबा ओके ता सहित कौन करबा while providing consisting positive reinforcement आमे सेमानकु रेनफोर्स करबा एवं कौन रेनफोर्स रे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रहइबा जहा द्वारा तांकर से जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर गुडा धीरे धीरे कमी कमी जिवो एवं सेटा कौन हबो सने एग्जिबिट करिवे बा शो करिवे गुड बिहेवियर गुडा को ओके नेक्स्ट name the classroom management technique that helps students to become self-disciplined and responsible for their own learning. Frequent punishment, authoritarian control, external rewards only, collaborative problem solving. Okay, ठीक अछि आंसर दियो डी तो ऑप्शन डी हबो तो ए जो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कोन ना गोटे प्रॉब्लम को आमे ग्रुप वर्क रे समस्त मिसी के कोलैबोरेटली सॉल्व करूछे तो मिसी के जते बेले सॉल्व करिया को चेष्टा करूछे सेते बेले हमकु कोन मिलुची ना पॉजिटिव गोटे रेनफोर्स मिलुची हमकु गोटे पॉजिटिव इनर साइट मिलुची जो थ्रू आमे मोटिवेट होछे यस आमे जिंसटा करि परिबा बा आमे हमर डे टू डे लाइफ रो प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबा तो आमे एनर्जाइज है कि मोटिवेट है कि गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई चेष्टा करूछे कोलैबोरेटली गोटे ग्रुप वर्क रे नेक्स्ट हला अकॉर्डिंग टू लेव हाइगर्स्की लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी ए पॉजिटिव एक्टिविटी ए कंडीशनड एक्टिविटी ना ए सोशल एक्टिविटी हाइगर्स्की द्वारा लर्निंग ता कोन वेरी गुड तो ऑप्शन डी ए सोशल एक्टिविटी आमे ताले देखिबा कोन ना लेव हाइगर्स्की विषय रे संपूर्ण रूपे बुझिबा लेव हाइगर्स्की होउछन्ती कोन ना सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी किए देथिले सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी गिवन बाय लेव हाइगर्स्की से सही थिरे कोन कहिसंती ना छुआर सोशल इंटरैक्शन से कहिसंती छुआटा सोशली जेते इंटरैक्ट करबा समस्तक सहित
तार सेते डेवलपमेंट हेई परिबो बा तार सेते एनहांसमेंट हेई परिबो तार डेवलपमेंट बा एनहांसमेंट केमिति हेई परिबो ना से सोसाइटी सहित जेते कोलैबोरेट करिवो जेते कोऑपरेट करिवो केमिति ना कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटी द्वारा ताले से एथिरे कहिसंदी केमिति कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटी रे हमें लर्ननेस ग्रहण करिबा ना एथिरे से किछि किछि जिंस कहिसंती कि आमको जणे लर्न करिया पई हेल्पफुल करिवो किए ना धर आम द्वारा किछि गोटे होउनी जणे आमको कोन करिवे केतेटा वर्ड देखो स्कैफोल्डिंग हैला गोटे वर्ड तांको थ्योरी रे गोटे हैला एमकेओ हैला आ गोटे हैला कोन ना जेपीडी हैला आ गोटे हैला जेएडी ओके एई चारटा जिंस तांको थ्योरी रे मने रखितबा कोन ना सपोज मो द्वारा किछि गोटे होउनी जणे मते स्कैफोल्ड करबा को आसिले स्कैफोल्डिंग माने कोन ना टेम्पोरारी हेल्प जणे किछि समय पई मते हेल्प करिया को आसिले सपोज गोटे छोट छुआ जेते बेले बाइसाइकल सिखिबा को जाउची सेते बेले से साइकिल चलेबा जानि न थाए तार ग्रैंड पेरेंट कोन करले ना ताकू साइकिल सिखेबा को गले ताकू साइकिल सिखेबा को गले माने कोन ताकू स्कैफोल्ड कले माने ताकू टेम्पोरारी सपोर्ट कले एंड ए टेम्पोरारी सपोर्टटा केते बेले कमी जाय ना ग्रेजुअली धीरे धीरे जेते बेले छुआटार लर्न बिहेवियर आसी जाय थाए से टेम्पोरारी सपोर्टटा धीरे धीरे रिड्यूस हे जाय थाए ओके तो सी ताको सपोर्ट कले देन आसिला कोन सपोर्ट करबा लोक को हमें कोन कहउचे ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स जी आम ठारू अधिक नॉलेजेबल थांती आमे तांको कहउचे तांको ठारू आमे सपोर्ट आशा करूचे मोर नॉलेजेबल अदर्स आम ठारू जी अदर्स बा नॉलेजेबल सी हमको सपोर्ट करूछंदी तो ए जो सपोर्ट करबा प्रक्रिया को हमें कोन कहउचे पिले देखो जस्ट ए मिनिट ए जेपीडी आ जेट को हमें बुझिबा गोटे डायग्राम टे करूची खातारे करिवो एटा कोन व्हाट ए स्टूडेंट कांट डू जोटा से टोटली करि परिबो नाही What a student can do alone निजे जोटा करि परिबो एटा को हमें कहउचे जेएडी देन कोन ना थर्ड वन आछि what a student can do with the help of others एटा को हमें कहउचे जेपीडी ओके तो बुझा को चेष्टा करो फास्ट हैला कि व्हाट ए स्टूडेंट कैन नॉट डू से कस्मिन काले करि परिबो नाही देन आसला व्हाट ए स्टूडेंट कैन डू अलोन मु निजे करि परिबी जेएडी माने कोन जेएडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मोर निजर एक्चुअल डेवलपमेंट केति की अछि मु केति की निजे निजे करि परिबी दैट इज जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट देन आसला जेपीडी मीन्स कौन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट माने कौन ना जोटा मु अन्य जनक ठारू मोर नॉलेजेबल अदर जी अछंती तांको ठारू सहाय्य नै कि जो जिंसटा करि पारुची सेटा हला जेपीडी एंड जेडी होची जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मोर आज पर्यंत वास्तव रे केतिकी डेवलपमेंट हेची मु निजर ओन एफर्ट माध्यम रे केतिकी करि पारुची ओके क्लियर नेक्स्ट लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मॉर्गन गेट्स क्रोबात स्किनर very important definition oh nice Gates very good next which of the following is an important social goal of education
तो पिले देखो तमर गोटे सिलेबस रे अछि गोल ऑफ एजुकेशन तो एठी पचरला सोशल गोल ऑफ एजुकेशन लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन encouraging competition among students developing a sense of cooperation and responsibility of promoting individualism without regard of others 16 नंबर कोटा हबो वेरी गुड ऑप्शन सी ना कौन देख पिला माने गोल्स ऑफ एजुकेशन तमरा सिलेबस रे अछि तो हमें गोल ऑफ एजुकेशन को दुईटा नहीं परिबा गोटे पर्सनल आ गोटे सोशल तो आमे जानी चे आमे ह्यूमन बीइंग आम भितरे आम निजर ह्यूमन टेंडेंसी आमर निजर जेलसी आमर निजर कौन ना जो गोटे जिनस रोचे कि लोभ आमर गोटे जो जिनस रोचे मु पाइबार आशा सब बेले मन रे आमर भरी करी रहुची तो कौन से गुडाक आमर आसी पर्सनल एम अंडर रे आ गोटे आसी कौन सोशल गोल अंडर रे काहेकि ना वी ऑल नो दैट वी आर सोशल एनिमल आमे समस्त सामाजिक प्राणी समाज बिना बंचिबा संभवपर नुहे समाज सहित कनेक्ट हेकी समाज सहित मिसिकी आमे चली थाउ ओके तो आमे समाज बिना केभे भी बंची परिबा नाही तो ताहाले से कहिला एठी आमे कोन करिया डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समस्त भितरे आमे कोऑपरेटिव मनोभाव समस्त को सहाय्य मनोभाव एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी नै कि आमे लर्निंग टाकू डेवलप करेबा ओके तो सोशल एम रे कोन रेस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन सोशल हार्मोनी टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चर जोटा हैला आमर एजुकेशन ट्रांसमिट कल्चर टू डेवलप सिटीजनशिप तो आम एजुकेशन माध्यम आमे कौन करू ना अन्य मानक आम निजर कल्चर को प्रिजर्व करू ता सहित आम कल्चर को अन्य मानक पाखे ट्रांसमिट करू शेयर करू एनहांस करू एही सब जिनस हमको हेल्पफुल हुए ओके टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर सोशल लाइफ रोल्स प्रिपेयर लर्नर्स प्रिपेयर फॉर लाइफ रोल्स तो प्रत्येक इंडिविजुअल को निज निज लाइफ रे रोल प्ले करबा हेल्पफुल हेई थाए कहा द्वारा ना ई सोशल गोल ऑफ एजुकेशन लाइफ रे कौन ऑब्स्टेकल आसुची लाइफ रे कौन प्रॉब्लम आसुची एई सब जिंस हमकु हेल्पफुल करि थाए टैकल करबा पई जहां भी प्रॉब्लम आसु जहां भी ऑब्स्टेकल आसु जहां भी सिचुएशन आसु टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ये आहुरी कौन करे ना डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ओके तो कौन है ना डेमोक्रेटिक वैल्यू लाइक इक्वालिटी जस्टिस फ्रैटर्निटी इंटीग्रेशन तापरे इक्विटी इंक्लूजन तापरे हला जो आमे कहूचे फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्शन अवेयरनेस ए सब जिनस गुडा का आमे क्रिएट करबा एवं आज सोशल एनिमल आमे सोसाइटी रे बसबास करबा पाई ईच सिंगल इंडिविजुअल हमर कोन रेस्पोंसिबिलिटी रही छी आमे आज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आम इंडिया पाई आम देश पाई आम भातृभाव पाई आमे कौन करबा दरकार आमर रियल कोर रेस्पोंसिबिलिटी कौन एटा हमको सचेतन करे थाए देन पर्सनल गोल ऑफ एजुकेशन कौन ना ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रमोट सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन एटा गला सोशल एटा आछि पर्सनल एम हैला सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन
तमर सेल्फ रियलाइजेशन आ एक्चुअलाइजेशन होची पर्सनल गोल ऑफ एजुकेशन एजुकेशन द्वारा निजर रियलाइजेशन एवं एक्चुअल रोल कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन तमे लाइफ रे रियलाइज करबा बा बुझिबा पई तुमको हेल्पफुल हबो ता सहित कौन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनल गोल ऑफ एजुकेशन ने हमर ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट हे पारि थाए ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल हमर समस्त प्रकार डेवलपमेंट ग्रोथ ए सब जिनस कौन है ना पर्सनल एम ऑफ एजुकेशन ओके पर्सनल हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन कौन ना हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन ता सहित कौन ना लाइफ लर्निंग बा लाइफ लॉन्ग लेसन ने हमको हेल्पफुल होई थाए ओके बुझिएला तो तमर अछि गोल्स ऑफ एजुकेशन सिलेबस रे गोल्स रे आसीबो गोटे पर्सनल गोल गोटे ला सोशल गोल रो माने होची कि डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी ता सहित होची टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट आवर कल्चर टू डेवलप सिटीजनशिप डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी तो ए सब जिंस गुडा आसीबो ता सहित प्रिपेयर फॉर लाइफ रोल ए सब जिनस सोशल एम करिवो पर्सनल एम रे होची हमर सेल्फ रियलाइजेशन आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हबो हमर ऑलराउंड डेवलपमेंट कॉग्निटिव साइकोमोटर अफेक्टिव डेवलपमेंट हबो ता सहित आमे लाइफ रे हैप्पीनेस आ सैटिस्फैक्शन पाई परिबा थ्रू आवर एजुकेशनल गोल ता सहित लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेली लाइफ रे हमर जहा भी प्रॉब्लम आसुची जहा भी सिचुएशन आसुची ताकू केमते कैटल करबा आ हैंडल करबा हमकु हेल्पफुल हेई थाए ओके नेक्स्ट है कौन ना दो रोल ऑफ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फुल फॉर्म गुडा मने रखिथिबो यार रोल कौन द रोल ऑफ एनटीए इज ओवरसी करिकुलम डेवलपमेंट मैनेज टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना डेवलप हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स बा पॉलिसीज कौन हबो वेरी गुड ऑप्शन सी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रा काम होची कंडक्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओके नेक्स्ट आसिला one of the key challenges in implementing competency based education is emphasizing students mastery of skill now developing personalized learning assessment now lack of flexibility in learning space encourage real world application of the knowledge कौन हवा ओके सौम्य रंजन कौन हवा एम्फासाइजिंग स्टूडेंट्स मास्टरी स्किल हबो काहे ना जनकर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करिवार हेले हमकु से देइचे की चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की चैलेंजेस ऑप्शन डी काहे के हबो एम्फासाइजिंग स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ स्किल स्टूडेंट मानकर मास्टरी स्किल को हमें कोन करिबा ना एम्फासाइज करिबा एटा होची पॉजिटिव जिंस हमें मास्टरी को एम्फासाइज कले तांकर कॉम्पिटेंसी ता डेवलप हबो ओके then developing personalized learning assessment encourage real world application of knowledge निहाती real world application सहित हमें कले ही कौन हबो ना हमर competency ता develop हबो एटा हेई पारुची then आउ रहिला option B and C developing personalized learning assessment and lack of flexibility in learning space okay तो कौन रहिबो ना lack of flexibility in learning space माने कौन आउ कौन कोटा रहिबो B हबो ना C हबो बी हबो ना सी हबो
मु तुमको कहली ए हबनी डी हबनी बी हब ना सी हब तमे इंडिविजुअलाइज लर्निंग असेसमेंट करिकी ईच एंड एवरी छुआंकर जहा कॉम्पिटेंसी अछि ताको मेजर करि दबो तो ये ऑप्शन बी होची करेक्ट पिना माने ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखि कि करूचो तमे क्वेश्चन टाको एनालिसिस करूनो कि तमे इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज लर्निंग असेसमेंट करि दबो सपोज तम क्लास रे 50 टा छुआ अछंदी 50 टा छुआंकर लर्निंग पेस केते लर्निंग एबिलिटी केते लर्निंग कैपेबिलिटी केते तमे सेही असेसमेंट टेक्निक यूज करके पर्सनलाइज लर्निंग असेसमेंट करि परिबो कि केमिति करिबो पर्सनलाइज लर्निंग असेसमेंट कहार कॉम्पिटेंसी कोन अछि ओके सीए पचरला वन ऑफ द की चैलेंजेस बुझो कोन पई हेची से देला के कॉम्पिटेंसी माने कोन मोर जो एरिया रे दक्षता अछि मु सेही एरिया रे एजुकेशन टा ऑप्ट कली ताले चैलेंजेस कोन ऑब्वियसली हमें जदि छुरा मास्टरी स्किल देखु छे माने मोर मास्टरी बा मोर हायर नॉलेज कोउथरे अछि मु धरो पोएम राइटिंग रे मोर मास्टरी स्किल अछि भलो कथा सेहिथिरे मोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हैला देन कोन ना एनकरेजिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मो नॉलेज रे मु जदि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज करूची ताले मो नॉलेज टा एनहांस हबो okay then lack of flexibility in learning space माने competency based education ने promote flexibility not lack of so this is correct okay next बा कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिड डे मील स्कीम तो हमर जो मिड डे मील स्कीम होची से मिड डे मील स्कीम ताको किए इम्प्लीमेंट करिसंथि सी ओके मिड डे मील स्कीम केबे इम्प्लीमेंट हेतिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओके ठीक अछि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना केबे हेतिला मन रखियो 2020 रे मॉडिफाई हेतिला पूर्वरु ना कोन थिला MHRD जत्ते बेले कि हमरो मिड डे मील स्कीम टा हेतिला यस 1995 तो 1995 समय रे यार ना कोन थिला MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट गला वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज तो आमे जो एजुकेशन एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज करूछे तार डिसएडवांटेज कोन एनहांस क्रिटिकल स्किल ना हमर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करेबो ना रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फॉर लो इनकम बैकग्राउंड्स जो माने लो इनकम बैकग्राउंड अछन से माने एक्सेसिबल करि परिबे नाही देन कोन इम्प्रूव क्लासरूम को इम्प्रूव करबा इंक्रीज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एटा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को इंक्रीज करि थाए कोन अब पिले 20 नंबर वेरी गुड ऑप्शन बी ना एटा कोन करे रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम आमे कहले एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यस 21st सेंचुरी स्किल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन बट एठी हमर कोन होची ना गोटे डिजिटल डिवाइड रो कांसेप्ट आसुची पिला माने कोन ना डिजिटल डिवाइड माने कोन
ना आमे कहूचे डिजिटल एजुकेशन बा टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बट से टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन समस्त ऑप्ट करी पारंती नाही बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज किछि भी हेई पारे तो सेटा को आमे कहूचे डिजिटल डिवाइड आमे कहूचे डिजिटल एजुकेशन डिजिटल जुग टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन किंतु आमे समस्त केबे भी टेक्नोलॉजी समान परिमाण रे ऑप्ट करि परिबा नाही ओके तो सेथि लगे एटा कोन करे रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड जो मानकर इनकम लो से मानकु जदि हमें कहबा समस्त गोटे गोटे फोन धरंतु समस्त गोटे गोटे लैपटॉप धरंतु एटा पॉसिबल नुह समस्त ए सब जिंस यूज करिकि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को ऑप्ट करि परिबे तो एटा होची वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ओके नेक्स्ट आसला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन एसडीजी 1 सस्टेनेबल एसडीजी माने कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टा हमर एजुकेशन सहित रिलेटेड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो एसडीजी 4 होची करेक्ट आंसर ये कहा ऊपर फोकस करे ना क्वालिटी एजुकेशन कहा ऊपर ना क्वालिटी एजुकेशन केमिति डेवलप हेई परिबो इंडिया रे से ता ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 रे हमरो यूज करा जाई थिला एसडीजी 1 रे कोन कहिथिला ना नो पॉवर्टी तो कोठारे ऑल इंडिया लेवल ले कोन ना पॉवर्टी रही परिबा नाही नो पॉवर्टी एसडीजी 3 कोन गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग एसडीजी 3 कहिथिला गुड हेल्थ एगुडा को जानी थाओ जदि केतले पचारि दिए एंड वेलबीइंग ताले एसडीजी 11 कोन कहिथिला ना से कहिथिला सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आमे जेते परिबा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज गठन करी परिबा ओके तो टोटल ऊपर केतेटा सस्टेनेबल गोल अछि सेटा तम दायित्व समस्त आंसर दियो जो माने जानि छ दियो न नै खोजो न नै परे आंसर जो माने देखिबो भी दबो हमरो एबे टोटल ऊपर केतेटा एसडीजी गोल अछि नेक्स्ट वाला कौन ना इन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020 व्हिच स्टेज ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स प्री स्कूल ईयर प्रिपरेटरी फाउंडेशनल एलिमेंटरी नन ऑफ द अबव 17 वेरी गुड दीप्ति पिंकी 17टा सस्टेनेबल गोल अछि यस बहुत बढ़िया पूर्णिमा 22 नंबर कौन जो माने सेशन को आसुच टिके सेशन को लाइक कर दिया शेयर कर दियो एनर्जी मोर थाउ पछे मो तंटी बसी जाऊ किंतु तम मानकर एनर्जी टा दबी दबी जाउची बी यस फाउंडेशनल स्टेज केमिति हमें देखिबा हमर एनईपी 2020 अनुसार जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बा पढेबार स्ट्रक्चर को आइछि पिले सेटा कोन ना 5 + 3 + 3 + 4 तो 5 टा कोन ना हमर फाउंडेशनल देन 3 टा कोन मोर ना प्रिपरेटरी देन पुणी 3 टा कोन ना मोर मिडिल स्टेज देन मोर 4 टा कोन ना सेकेंडरी स्टेज ओके
तो ये जो फाउंडेशनल ले कौन आसुची ना 3 ईयर एंड 2 ईयर ये जो 3 ईयर आसुची एटा होची प्री स्कूल बा अंगनवाड़ी देन ये जो 2 ईयर आसुची एटा आसुची क्लास 1 एंड क्लास 2 देन प्रिपरेटरी रे कौन आसुची ना क्लास 3 4 एंड 5 देन मिडिल स्टेज रे आसुची कौन ना क्लास 6 7 एंड 8 सेकेंडरी रे कौन क्लास 9 10 11 एंड 12 ओके बुझियला देन एटा कौन होची ए 5 टा होची 3 रु 8 इयर्स पिला मानक पई बयस भी मन रखि थाओ 3 रु 8 वर्ष पिला मानक पई होची 5 इयर स्कूलिंग प्री स्कूल प्लस क्लास 1 2 देन 8 रु 11 होची कौन ना क्लास 3 टू 5 देन 11 रु 14 होची कौन ना 6 7 8 6 रु 14 सॉरी 11 रु 14 वर्ष एवं 14 रु 18 वर्ष बयस केते सेकेंडरी स्टेज मन रखि थाओ एटा होची ईयर एटा होची क्लास एटा होची स्टेजेस तो आमर चारिटा स्टेजेस देछि 5 + 3 + 3 + 4 5 होची फाउंडेशनल 3 होची प्रिपरेटरी पुणी 3 होची मिडिल देन 4 होची सेकेंडरी फाउंडेशनल को दी भाग रे विभक्त करिछे प्री स्कूल एंड क्लास 1 एंड 2 प्री स्कूल होची 3 इयर्स एंड क्लास 1 एंड 2 जोटा एज रेंज रहउची 3 रु 8 वर्ष देन प्रिपरेटरी क्लास 3 4 5 एज रेंज रहउची 8 वर्ष रु 11 वर्ष देन आछि मिडिल स्टेज जोटा कि रहउची क्लास 6 7 8 बयस सीमा रहउची 11 रु 14 देन सेकेंडरी स्टेज रे हमर क्लास 9 10 11 12 आसुची बयस सीमा रहउची 14 रु 18 ओके बुझियला नेक्स्ट Which of the following organization is responsible for reform of elementary school curriculum in Odisha? Directorate of Elementary Education, SCRT Odisha, BSc Odisha, Odisha State Bureau of Textbook Preparation and Production. B, B, C, 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 okay. Yes. Very good. Option B, कौन ना State Council of Educational Research. फुल फॉर्म गुड़ा का मन रखुवा पिला माने RESERCS रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओके तो ये कौन रेस्पॉन्सिबल रहे आपर कौन ना कौन सी करिकुलम रिफॉर्म बा टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन बा किछि भी रे एवं नेशनल लेवल ले किए रुहे ना जेमते स्टेट लेवल ये नेशनल लेवल एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल लेवल कोठी करिकुलम रिफॉर्म हबो बुक स्ट्रक्चर कौन हबो सेटा सी बुझी थाए नेशनल लेवल ओके स्टेट लेवल हमर एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बुझी थाए ओके मु क्लास रे लेखिथिली थ्योरी प्लस पीआईक्यू आमे करिबा मु पीआईक्यू करूची तार जहा जहा एक्स्ट्रा जिंस मु लेखिकी जाउची एनसीईआरटी केबे 1961 सेप्टेम्बर 1 देन तमरा एससीईआरटी केबे हितला कमेंट दियो नेक्स्ट बापिले बुझियला ना व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग देखो तम मानक पई एबे डिस्कस करके आस्थिले एबे तमरा स्कैफोल्डिंग भूल होबो कि लाइफ टाइम हमें प्रीवियसली डिस्कशन करिचे तमरा मने रहि जायछि 11टा जाय क्लास हबो ओके तो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर्स एंड peers in completion of learning tasks skipping the difficult parts of the learning tasks cramming na project assignment कोट हबो पिले 24 Very good. Option A, na support provided by teachers and peers in completion of learning tasks. से particular task टा complete हबा पर्यंत teacher एवं peer मानक द्वारा छुआटी को support मिलिबो.
नेक्स्ट होची कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन ने जो ब्रॉडर मीनिंग सहित ए भितर कोटा कनेक्ट कंप्लीटिंग स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन ना कौन स्टडिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन इन स्कूल लाइफ लॉन्ग एजुकेशन स्टडिंग विथ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कोटा 25 नंबर भाभी के आंसर दियो very good option C lifelong education which of the following is the closest to broader meaning of education education is a lifelong process inclusive education nuha D nuha completing the schooling and higher education nuha then कौन studying a broad spectrum of subject नुह सी पचारि जोटा closest to broader meaning तो education कहले आमे कौन बुझुचे education is a lifelong process it is a lifelong process which starts from the mother's home मदर्स रा मातृ गर्भ स्टार्ट होता है एवं टर्म बा हमर मसाणी भूई रे हमर एजुकेशन बा शिक्षाटा सरी थाए ओम टू टर्म मेथड आमे कहूचे एजुकेशन तो कौन ना education na जोटा broader meaning it is a lifelong process which starts from the womb and end at the term तो समस्तंग पाखरे education मातृ गर्भरु ही स्टार्ट होई थाए आमे जो भली भाबरे environment मा गर्भाशय रे पाई थाउ सेही प्रकार environment रे आमे सेही प्रकार ज्ञान नै कि बढ़ी थाउ एवं तापरे समाज को आसिला परे आम मृत्यु पर्यंत मध्य आमे किछि ना किछि लर्न करि थाउ जेमिति कि आम मृत्यु बेल को हमर सेल्फ रियलाइजेशन हेई थाए मो जीवन रे मु कोन करि पाइली मो जीवन रे मु कोन न करि पाइली मोर कोन कमी रहिला मु आउ कोन बा करि पारि थांती मु आकु देखि देई थांती ताकु देखि देई थांती सब जिंस गुडा का हमर मृत्यु समय रे मध्य जो सेल्फ रियलाइजेशन हेई थाए से गुडा का मध्य लर्निंग रे जाय बुझेला क्लियर नेक्स्ट which of the following is not a necessary condition for learning कोटा गोटे necessary condition learning पाई नुहे interest motivation active participation fear of punishment for not learning तो जो माने पिला माने चैनल ले अच्छा टिके सेशन को लाइक करि दियो आसुछ बट सेशन लाइक करूना टिके 500 लाइक तो एटलीस्ट करि दियो ना 500 लाइक भी करबनी जो माने अच्छा सेशन को टिके लाइक करि दियो शेयर करि दियो एंड मोर रु मोर पार्टिसिपेट करिया पई ट्राई करो यस ऑप्शन डी कोन ना फियर फॉर पनिशमेंट ऑफ लर्निंग कोन ना फियर ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉट लर्निंग ता गोटे कंडीशन फॉर लर्निंग नुह इंटरेस्ट हबो मोटिवेशन हबो एक्टिव पार्टिसिपेशन ए गुडा को सब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रे जाउची कोन ना पॉजिटिव जिंस रे जाउची एंड फियर फॉर पनिशमेंट दिस शोज द नेगेटिव इंटरैक्शन जोटा कि गोटे कंडीशन ऑफ लर्निंग नुह तो आमे जदी पनिशमेंट दबा लर्निंग पाई ए द्वारा कोनसी लर्निंग हबो नाही मे बी पिला जो जोर जबरदस्ती लर्निंग ता करिवो सेटा सेति कि फ्रूटफुल हबो नाही ओके नेक्स्ट ना कौन which of the following is not related to the objectives of education education objective सहित कोटा related नुह core contents ना evaluation teaching learning activities quality of school infrastructure कोटा which of the following is not related to objective of education मो फिट एंड फाइन अच्छी देह पूरा भल अच्छी देह कहीं भल हेनी सकाळु नेले देख सकाळु मु एपर्यंत पिला माने खाई नाही खाइबी केमती काली राती 12टा गोटे पर्यंत तम मटेरियल देखिबा को गला कि तुमको काली क्लास रे कोन पढेइबी तापरे आहुरी भी बहुत क्लासेस अछि तमर 11टा रे क्लास नै सला परे आहुरी बहुत सारा क्लासेस अछि गोटे परे गोटे पूरा संध्या 6टा जाय लागि छि ता पई भी प्रिपेयर होबा को पडिला ई सब जिंस प्रिपेयर होबा भितरे लेट नाइट हे गला आ सकाळु एते जल्दी मु कुंभकर्ण उठे नाही
मु उठिला बेल को दिन 9टा लेट्रे शोबी दिन 9टार उठबी मुझे तुम मान सका 6टार उठी गाधे पाधे रेडी है दौड़ी इन्स्टिट्यूट तो ऑब्वियसली सकाळु जेतु उठी एपर्यंत खाई नहीं तो गला पूरा मोर बसी गलानी से लगे मे भी तुम मानक लगुव देह भल नहीं बट मु पूरा फिट एंड फाइन अच्छी जहाँ सकाळ आउ जेहेतु भोकरे रही जाइए एपर्यंत किसी खाइनी खाली ब्रश करके पानी पीक रही तो गलाटा सेमती शुभा जाउची ओके कौन हम पिला माने डी हम मैम आज 12टार एजुकेशन अवेयरनेस क्लास हेनी एत सब है पुणी एजुकेशनल अवेयरनेस हम ताले मु मरजीवी एते सब है पर जदि एजुकेशनल अवेयरनेस क्लास हम ताले मु आज डेड बॉडी है बाहर ओके तुम मैंने कह ऑप्शन डी ओके से कौन पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कोर्स कंटेंट इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज तो निहाती भाव में रहिबो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आमे कौन पढ़ेबा को जाउछे ओके तापरे कौन ना कोर्स कंटेंट कौन कौन कंटेंट रहिबो जो गुडा छुआ माने पढ़िबे निहाती देन सेही कंटेंट पाई आमे कौन करबा को लर्निंग एक्टिविटीज नबा इवैल्यूएशन रहिबा यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वालिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट कम्स अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन बा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ओके बुझेला तो आहुरी आमे कौन कहि परिया फास्ट आमे कौन ऑब्जेक्टिव नमा कोर्स कंटेंट हैला ओके देन कौन हैला तापरे आमे फिक्स करिबा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहि दउची सिस्टम टा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देन आमे कौन करिबा प्लानिंग कौन करिबा प्लानिंग अंडर रे ही रहइबा एक्टिविटीज देन से एक्टिविटीज को हमें एग्जीक्यूट करिबा एग्जीक्यूट करि सारिला परे एनालिसिस करिबा एनालिसिस परे इंटरप्रेट करिबा इंटरप्रेट करि सारिला परे से जिंस केते दूर सक्सेसफुल हेछि कि नाही इवैल्यूएट करिबा पई हमें क्वेश्चन आंसर करिबा तो ये सबू जिनस आमर कौन थाए गोटे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ने थाए बट क्वालिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एटा कोथरे आसी थाए ना फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट ओके बुझियला नेक्स्ट ना डैश इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर पिले देखो एबे डेफिनेशन टा मु किछि समय आगरु तुमको डायरेक्टली कहिथिली आ तमरो परीक्षा रे ही आसीची भाबो तुमको ए क्वेश्चन गुडा हेल्प करूची बा हमें थियोरेटिकली पढिबा द्वारा केते हेल्प करूची निजे एनालिसिस करि परिबो टिके आगरु हमें डिस्कशन करथिले ए पॉइंट पूरा मु स्क्रीन रे लिखिथिली निजे लिखिथिली एटा कि डैश इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर यस learning is relatively permanent change in behavior बुझियला next according to NEP 2020 what is the name of the first stage of educational in the 5+3+3 4 structure of education preparatory foundational primary elementary एबे पढाइथिली एबे बुझाइथिली सब जिंस डेली टाइम मोर 12टा बेले होउची डेली 12टा 12 PM रे मोर डेली क्लास होउची आज जेतु स्पेशल सेशन आज एते बेले छी कोन हबो वेरी गुड फाउंडेशनल स्टेज 5+3+3+4 रे फर्स्ट स्टेज होउची फाउंडेशनल स्टेज सेकंड होउची कोन प्रिपरेटरी थर्ड होउची हमर मिडिल फोर्थ होउची हमर कोन ना सेकेंडरी स्टेज ओके देखो आमे गोटे थियोरेटिकल बुझिले हमकु केते हेल्पफुल होउची सही क्वेश्चन हो किंतु गोटे क्वेश्चन हो हमें 5 प्रकार आंसर पाई पारुछे जोटा कि हमकु हेल्पफुल नेक्स्ट कोन ना ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज द टीचर शुड गिव मोर अटेंशन टू ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट स्लो लर्निंग स्टूडेंट ना ऑल स्टूडेंट जेते बेले क्लासरूम टीचिंग लर्निंग चालुची सेते बेले एज ए टीचर हमकु काहा को अटेंशन दबार अछि तो धीरे धीरे चल डी यस ऑल द स्टूडेंट्स तो सब स्टूडेंट को हमको अटेंशन दबार अछि बुझेला
तम मानक पाई प्रिपेयर हेबी बोली भाबी कि मु राती 12 बसी खाली कवि हे जाइथिली फुपट कविता। नेक्स्ट पिला माने एटा होची तमरा बीएड रा बुक्स तो जो माने इंटरेस्टेड अच्छा बुक नै कि भलो भलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा पई एवं विथ तार डिटेल्स एक्सप्लेनेशन तमे ए बुक परचेज करि परबा एंड यूज कोड YT46 जोतरे कि तमो किसी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलिबो। जो माने इंटरेस्टेड अच्छा कोन बुक नबार अछि कोन केमिति प्रैक्टिस करियार अछि ए नंबर जो स्क्रॉल होची से नंबर रे तमे कॉल करके बुक बाय करि परबो। Then देखो all teacher education colleges in Odisha are under the administrative control of SCRT Odisha. ना Directorate of Secondary Education, Directorate of Higher Secondary Education, ना Department of Higher Education. Yes, also integrated B.Ed पाई मध्य helpful हबो पिला माने कौन हबो देखो एटा देखिए मो छुआ माने कौन आंसर दौरान 3 नंबर ए ओके एससीआरटी ओडिशा ओके सी ओके ए सी दिया दिया आंसर दिया लास्ट को मु कहबी तमर जोड़ा टीचर एजुकेशन कॉलेज हवा पिले टीचर एजुकेशन कॉलेज कहले कौन ना तमे जो बीएड कॉलेज रे पढ़िबो तमर एटी एससीआरटी टा काहे के आसीबो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑप्शन ए हबनी डी हबा नाने हायर एजुकेशन कौन करे सब रोल फंक्शन कौन हबा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कौन हबा केमिति चले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बुझी थाए कौन ना हायर एजुकेशन अंडर रे हमर आसे हमर जोटा टीचर एजुकेशन कॉलेज तो तार कौन फंक्शन रहइबो तार कौन प्रोसीजर रहइबो तार कौन टीचिंग स्टाइल रहइबो ऑल डिसाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE। नेक्स्ट ना टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एट टीचिंग सेते बेले बेस्ट डिफाइन हो केते बेले ना ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट टीचर थारु स्टूडेंट को नॉलेज ट्रांसफर कंट्रोलिंग लर्नर्स इन द क्लासरूम फॉर टाइमली प्रोग्रेस एंड कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंप्लीशन करबा फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करबा लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग लेक्चर दबा एवं एक्सप्लेन करबा साधा कहलेनी क्वेश्चन न पढ़िले फुल एम्प्टी हबो त क्वेश्चन पढ़ा तो नीरे यस ऑप्शन सी फैसिलिटेटिंग लर्निंग बोर लगिलानी ना मते भी बोर लगिलानी कोन नाचिबा टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एट ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर टू लर्नर्स एटा गोटे ट्रेडिशनल मेथड जोटा कि केवल टीचर सेंटर्ड मेथड रे हेई थाए कंट्रोलिंग लर्नर्स एटा गोटे अथॉरिटेटिव मेथड होउची केवल अथॉरिटेरियन रोल प्ले करबा ओके लेक्चरिंग एक्सप्लेनिंग एटा मते टीचर सेंटर केवल सीए कहउतबा सीए एक्सप्लेन करतबा जे बुझु कि न बुझु किंतु टीचिंग ता सेते बेले बेस्ट एक्सप्लेन हेई परिबो जेते बेले आज ए टीचर आमे कोन करबा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन ए स्टूडेंट को एनकरेज करेबा ताको फैसिलिटेट करेबा मोर एंड मोर लर्न करबा पाई बुझियला who said the destiny of India being shaped under in her classroom? Report of the Education Commission, now NEP 2020-86-68. मु उपास अच्छी माने मु का को खाइबा को छाड़ीबिनी
1964 66 रे 67 कुआडे आसला अंजलि गुलुआ कॉमेडी देखिछ ना गुलुआ कॉमेडी गुलुआ कौन कहब मोर उन्नति हेई परनी माने मु का उन्नति देखि परिबिनी सेति लागि तमन पई सकाळ मु खाइनी माने मु खाइबा को छाड़ीबिनी नो ब्रेक जदि मो गला बसिलाणी तमे भी टिके परिश्रम कर मो संगे मिसिकी भागीदार हुआ खाइदेव एका एका जाइकी मु कौन खाइबी ऑप्शन ए रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमिशन 1964-66 ओके अच्छा बहुत बढ़िया ताले हमें ट्विन्स तो कोठारी कमिशन कहिदिला गोटे देशर भविष्यत बा आम इंडिया भविष्यत आमर क्लासरूम रे गठन होउची क्लासरूम रे गठन होउची माने कोन क्लासरूम रे गठन होउची माने नुवा केवल चारि कांतर क्लासरूम भितर आमे करूचे तार माने हैला सी कोन कहिथे कोठारी कमिशन ने आउ गोटे जिंस मध्ये क्वाइछि पिले कोन ना एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट माने आमर एजुकेशन द्वारा आमर नेशनल डेवलपमेंट हेई पारिबो आमे एजुकेशन ता कोठो पाई परिबा ना आमर क्लासरूम माने आमे जेबे विद्यालय को जिबा श्रेणी गृह रे बसिकी शिक्षा ग्रहण करिबा सेते बेले ही कोन हेई पारिबो ना आमर नेशनल डेवलपमेंट हेई पारिबो बा आमर भविष्यत गढाई पारिबो वेरी गुड एई मोटिवेशन रहइबा दरकार मु पानी बोतल पानी ग्लास पानी बाबूजी एठी ढाळ फाळ थिले ऑफिस रे भी ढाळ आनी की थोई देई थांदी पानी पीबा पई नेक्स्ट देखो 34 नंबर SAMS is an integrated portal which provides a common platform for कौन ना admission into various courses across Odia through e-admission and also several e-services to students. What is the full expansion of SAMS? Okay. ना students admission management system, ना student academic management system, student academic monitoring system, student admission monitoring system. सबु बेले बार्तारे ही होउची कोटा हबा साम्स रो आज स्पेशल सेशन बोली एबे होची ये स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट बा ना अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कोरेस्पोंडेंस ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज देखो डिस्कशन करिदिले गोटिए क्वेश्चन सेही थ्रू हमें थ्योरी डिस्कशन करिदिले केमिति या भितर आहुरी दीटा क्वेश्चन आसिलानी ओके पिले देख तमे माने होच कोन कहलो मुएना कहबी तमे होच पागल काहे की पागल तमे तो पागल मु होची तम ठारू बद्द पागल 12टा बेले कांस्टेंटली मोर पेडागोजी क्लास होउची किंतु जेते बेले मु गोटे किछि स्पेशल सेशन नेबी तो सेही स्पेशल सेशन टा मु केते बेले नेबी मु जदी 12टा बेले नेबी आ पेड क्लास नेबिनी की मु कांस्टेंटली ना माने 8टा बेले क्लास नबा मोर भूल यस 3 to 8 इयर्स 8टा बेले क्लास नबा मोर भूल क्लास कांस्टेंटली अछि 12टा बेले होउची तो मु आजि आ 12टा बेले काहे की नेबी आज 3 घंटा वाईटी गोटे सेशन तम साने ठिया ही सला परे तमे भाबुछो मु पुन थरे जेबी 12टा बेले क्लास नेबी मो सेही जिनसटा हजारे थर क्लास स्टार्टिंग रु कहलिनी आज स्पेशल मैराथन आज 3 घंटा मैराथन किंतु 12टा रे रेगुलर क्लास काली जेमती 12टा रे होउतला काली सेमती 12टा रे हबो सोमवार दिन जेमती 12टा रे होउतला सेमती 12टा रे हबो 3 घंटा रे क्लास टा पुनी मैनेज करिवार अछि स्पेशल सेशन टा जो टाइम रे हमको टाइम मिलुची आमे नै कि कवर अप करिवार अछि नेक्स्ट कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एम्स जो हमारा एजुकेशनल एम्स बा गोल अछि एटा कोटा फंक्शन नुह प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू लर्निंग एक्टिविटीज ना प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज टू स्कूल्स ना सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स ना क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन कोटा एजुकेशनल एम नुह समस्त टिके सेशन को लाइक करि दियो समस्ते टिके सेशन को लाइक कर दियो पिला माने एंड शेयर कर दियो सेशन को कौन हबो प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू लर्निंग एक्टिविटीज हबो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज टू स्कूल क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग लर्नर्स मोटिवेशन एजुकेशनल एम्स अछि आमे लर्नर को कौन करबा मोटिवेट करबा देन कौन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज टू स्कूल ना सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन एंड लर्निंग आउटकम्स कोटा हबो बी हबो ना सी हबो
डिसाइड करके आंसर दियो, बी हबो ना सी हबो। आउटकम अच्छी बी सी ओके। तमे माने एई भलिया क्वेश्चन गोटे आगरु करिके आछो पिले, जदि एटा तमे भूल करूछो ताले मु एठी मो निज मुंड पिटी देकी रक्त बाहर कर देकी एठी लिखि देबी क्लास आज ऑफ। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। आमे पूर्वरु देखिले गोटे क्वेश्चन देखिदिले एजुकेशनल रिसोर्सेस प्रोवाइड करिया स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर। आमे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिले, इंफ्रास्ट्रक्चर कम अंडर एजुकेशनल रिसोर्सेस, एटा गोटे एम अंडर रे आसीबो नाही। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन काहे के आसीबोनी, तुमको पास स्टेप बतैथिली कंटेंट क्रिएट करिबा, तापरे कोन करिबा, हमरो कोन करिबा, को एक्टिविटीज फॉलो करिबा, छुआ मानू केमिति मोटिवेट करिबा, को स्ट्रेटजी रे मोटिवेट करिबा, आ छुआंकर लास्ट फेज रहइबो इवैल्यूएशन। सही फेज भितरे कोठी थिला कि एडिक्वेट रिसोर्सेस। एजुकेशनल एम नुह कि मु एडिक्वेट रिसोर्सेस देबी। एजुकेशनल एम रहउची इवैल्यूएशन मेथड, एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल मेथड आ स्कूल मेथड दुईटा जिंस अलगा जिंस। ओके, भाभी चिन तमे एबे एमितिका जिंस गोटे करिथिलो, एनालिसिस करो कि एजुकेशनल एम आ गोटे इंस्टीट्यूशनल एम। इंस्टीट्यूशनल जदि इंस्टीट्यूशनल कथा आसी थांता, इंस्टीट्यूशनल एम गोटे, एजुकेशनल एम गोटे। ओके, नेक्स्ट आसुची कोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, नोन ऑफ द अबव। कोटा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। वेरी गुड। रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल माने कोन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल? मेमोरी लेवल कहा द्वारा दिया जाइथिला ना, मेमोरी लेवल हर्बर्ट देइथिले। तो मेमोरी लेवल माने कोन, आमे केवल क्रैमिंग बा रोट मेमोराइजेशन माध्यम रे मने रखिबा, ओनली रिकॉल करिबा, हमर ओन अंडरस्टैंडिंग किछि नाही। मेमोरी लेवल माने हमर निजर गोटे सिंगल अंडरस्टैंडिंग नाही, आमे केवल रोट मेमोराइजेशन माध्यम रे, क्रैमिंग माध्यम रे जिंस गुडा को मने रखिबा। ओके, देन कोन रिफ्लेक्टिव लेवल किए देइथिले, मोरिस। मोरिस किए दे, एटा मने रखिता काले पड़ जिबा, किए देइथिले। रिफ्लेक्टिव लेवल माने हमर कोन, थिंकिंग, हमर क्रिटिकल थिंकिंग हो, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हम थिंकिंग रे हमें भाबिबा, किछु गोटे जर्नल हो, किछु गोटे भावना हो, हमें कोन करिबा, हमर जिंसटा को डेवलप करेबा। तो मोरिस कहिसंदी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग, जहां भी हमें भाबुचे ताकू क्रॉस चेक करिबा, आउ थरे भाबिबा से जिंस गुडा को। ओके, देन कोन अंडरस्टैंडिंग लेवल माने हमें केवल कॉम्प्रिहेंड करिबा जिंसटा को बुझिबा। तो एइथरु जदि तुमको हाईएस्ट लेवल पचारे रिफ्लेक्टिव लेवल हैला, जदि सबुठारु लोएस्ट लेवल पचारे ताले एटा होची लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जोटा कि हमें कहूचे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवलटा एवरेज आसीबो एंड हाईएस्ट लेवल होची हमर कोन ना रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, आ अंडरस्टैंडिंग लेवल किए देथिले, अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिस देले किए मने रखिबो, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी देले हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल किए देथिले, रिफ्लेक्टिव हंट। ये सॉरी मु भूल से, सॉरी एटा अंडरस्टैंडिंग रो मोरिस, सॉरी, थैंक यू सूर्यस्नाता। रिफ्लेक्टिव टा हंट, मु भूल से अंडरस्टैंडिंग टा रिफ्लेक्टिव ठी लेखि के सेते बेले कहूची, ये हंट कहिथिले आ ये मोरिस कहिथिले अंडरस्टैंडिंग टा। थैंक यू वेरी मच। मु बाउले रे सेपडे अंडरस्टैंडिंग टा को सेते बेलु मोरिस मोरिस हे की कहूची। ओके, तो थैंक यू सूर्यस्नाता, ठीक करि देइथिबारु। रिफ्लेक्टिव टा होची हंट,
ठीक कर दियो पिला माने मोरिस्टा होची कोन ना अंडरस्टैंडिंग लेवल मु सेते बेलटू भाबुची कोठी गोटे भूल करूची बट कही कही मु जाई छी पूरा ठीक अछि बुझियला तो मेमोरी लेवल होची लोएस्ट लेवल जोटा कि हर्बर्ट देथिले रोट मेमोराइजेशन रिफ्लेक्टिव लेवल देथिले हंट थिंकिंग लेवल करबा ओके देन कोन ना अंडरस्टैंडिंग लेवल माने कॉम्प्रिहेंड करबा एवं एटा देथिले मोरिस बुझियला देन Bloom's taxonomy of educational objective is a collection of teaching strategies ना कौन a classification of teaching skill, classification of learning skill, a collection of hierarchical classification of educational objective. Okay, Bloom's taxonomy कौन करिथिला very good এটা হচ্ছে a collection of hierarchical classification of educational objective तो हे hierarchical structure टा कौन थिला remember understand apply analyze then last टा होची create and fifth टा कौन fifth टा मने पड़नी first है remember then understanding then apply then analyze then कौन evaluate then create evaluate then create तो एटा होची ब्लूम टैक्सोनॉमी रा क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करथिले रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग तो हाईएस्ट फेज तुमको बेले बेले पचारि पारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रा हाईएस्ट फेज कोन क्रिएटिंग एंड जोटा सबा तळ फेज टा कोन ना रिमेंबरिंग ओके बुझियला पिले नेक्स्ट जीवा ना डैश इज डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आउ थरे देखो कोन क्रिएटिविटी साइकोलॉजी लर्निंग अटेंशन ऑप्शन चेंज हो जाई किंतु सेही सेम क्वेश्चन तमरा रिपीट हे जी कोन ना लर्निंग सेठी ऑप्शन ए थिला एठी ऑप्शन सी हे जी किंतु देखो क्वेश्चन मध्ये रिपीट होची तो तमे एथरु कोन सिखलो पीआईक्यू डिस्कशन करो पीआईक्यू प्रैक्टिस करो पीआईक्यू सहित कोन ना तारो रिमेंबरिंग थ्योरी जदी पीआईक्यू रे मते लर्निंग विषय देछि मु लर्निंग रा सबु तक पढिबी ओके नेक्स्ट देखो कौन व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीएबी सीएबी रा फुल फॉर्म कौन मु सब बेले कहि छी एब्रिविएशन माने रखबा सेक्टरल एकेडमिक बॉडी फॉर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर ब्रॉडर एजुकेशन सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ बेटरमेंट एजुकेशन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन हबा पिले तो ऑप्शन डी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920 रे एटा एस्टैब्लिश हेइथिला एवं 2004 रे आउथरे रिवाइज्ड मध्ये हेइथिला रिवाइज्ड हेइथिला केते 2004 रे एवं 1920 रे ये कोन हेइथिला एस्टैब्लिश हेइथिला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये बोथ सेंटर एवं स्टेट को एजुकेशन रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करे सेंटर हो एंड स्टेट हो से कोन करे ना एडवाइस प्रोवाइड करे रिलेटिंग टू एजुकेशनल मैटर ओके नेक्स्ट आसला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी रे कोटा रिलेटेबल टू नुहा कन्फर्मिटी ओरिजिनलिटी फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी आंसर दियो
creativity, thinking of outside the box. Yes. Conformity, creativity रे originality आसीबो, fluency आसीबो, flexibility आसीबो, novelty आसीबो. तो creativity माने कोन? uniqueness आसीबो, newness आसीबो. तो माने कौन? क्रिएटिविटी माने होउची जोटा कि छुआ किछि गोटे यूनिक वे रे, किछि गोटे डिफरेंट वे रे, किछि गोटे थॉट प्रोसेस को यूज करूची, जो थिरे फ्लुएंसी अछि, फ्लेक्सिबिलिटी अछि, मो आइडिया को मु चाहिले एबे चेंज करि परिबी, मॉडिफाई करि परिबी, जोटा हेल्पफुल हबो. ओके, बुझियला. एंड क्रिएटिविटी कौन ना, ऑल क्रिएटिव लर्नर्स में बी इंटेलिजेंस, बट आउ गोटे जिनस कि सब क्रिएटिविटी माने इंटेलिजेंट है पारंती, किंतु ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नॉट क्रिएटिव. ए सेंटेंस ता मने रखी थिबो. जदि मु बुद्धिमान अछि ताले माने नुह कि मु क्रिएटिव थिबी, किंतु जदि मु क्रिएटिव थिबी ताले मु बुद्धिमान मध्य थिबी. ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन. ओके, देन कोन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग इन लेसन एट इंट्रोडक्शन स्टेज. जो आमे कहले इंट्रोडक्शन स्टेज बाय एंगेज स्टेज, एटा कोउटा लेसन रे फॉलो करा जाए नाही. असेसमेंट ऑफ एंट्री परफॉर्मेंस, assessment of previous knowledge, assessment of learning outcomes of the topic being taught, relating to this essence of the topic. कोटा हो पिला माने? डी मोहित. ओके, 42 42 42 डी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कौन? मु तुमको कही जेते बेले आमे छुआटा को एंगेज करोछि, आमे कोन करबा ना तर एंट्री परफॉर्मेंस. एंट्री परफॉर्मेंस माने कोन? सीए से जिनसटा पढ़िया पई रेडी अछि तो सेटा आमे देखिबा. मु ए चैप्टर टा पढौछि, काहे कि रेडी अछि कि नै केमते देखिबा, काहे कि ना आमे तांको फर्स्ट स्टेज रे 5 रो कोन एंगेज, आमे ताको एंगेज करेबा, तांकर इंटरेस्ट आनिबा, तांको क्यूरियस करिबा, तांको मोटिवेट करेबा, गोटे प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करिबा, जहा द्वारा कोन छुआटा सेटा पढ़िया पई जानिबो. तो आमे तांकर एंट्री परफॉर्मेंस को असेस करले ठीक हबो. असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मु जो क्वेश्चन पचारली पिले जंगल सुरक्षा विषय रे कि तमे झुणा महू कोउठु पाउचो ना, हमें जंगल लु पाउछु, से जानी छंती कि नहीं जंगल बोली वर्ड टा तांकर पूर्व ज्ञान जंगल विषय रे किछ अछि कि नहीं, सेथि लागि सेही जिनसटा मु असेस करी क्वेश्चन पचारिली रिलेटिंग टू द एसेंस ऑफ टॉपिक. मु जो कहूची जो झुणा महू आनिलो त मानु हेल्पफुल केमिति हैला, केमिति सहायता कला, छुआ माने जो क्लास रे कहिले सेटा कोन एसेंस बा वैल्यू ऑफ दैट टॉपिक रहिला. किंतु मु कहितली इवैल्यूएट हमें कोउठी करूचे ना लास्ट स्टेप माने 5 नंबर स्टेप रे हमें इवैल्यूएट करूचे. तो हमर इंट्रोडक्टरी फेज रे असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टॉपिक बीइंग टॉट आसीबो नाही. बुझियला पिले? क्लियर? नेक्स्ट, which type of learning influences the attitude and values of the learner? affective, cognitive, cognitive, psychomotor. गोटे छुआर एटीट्यूड एवं वैल्यू को को प्रकार लर्निंग टा इन्फ्लुएंस करि थाए. ओके ओके ओके, वेरी गुड. ऑप्शन ए अफेक्टिव डोमेन. कॉग्निटिव माने कोन? डूइंग. कॉग्निटिव माने कोन? थिंकिंग. कॉग्निटिव माने डूइंग और एक्शन. कॉग्निटिव माने थिंकिंग. देन साइकोमोटर माने कोन? हमर मोटर मूवमेंट. से ग्रॉस मोटर स्किल हो बा हमर फाइन मोटर स्किल हो, ता सहित हमर साइकोलॉजी बा थिंकिंग प्रोसेस बा सब जिनस को आम यूज करी थाउ. तो आमर एटीट्यूड है, आमर वैल्यूज है कम, आमर फीलिंग्स है कम्स अंडर आवर अफेक्टिव डोमेन. नेक्स्ट आसला कौन ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अराउजिंग इंटरेस्ट इन द लर्नर्स. लर्नर्स भीतर इंटरेस्ट आनिया पई को टीचिंग टेक्निक टा हेल्पफुल होई थाए? पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट एंड रिवार्ड, फीडबैक, ब्लेम एंड थ्रेट ऑफ फेल्यूर.
कोटा हम पिला माने वेरी गुड वेरी गुड रेनफोर्समेंट एंड रिवार्ड अंडर रे ही तमरा फीडबैक ता आसीबो पिला माने रेनफोर्समेंट एंड रिवार्ड तो रेनफोर्समेंट एंड रिवार्ड डज नॉट मीन कि तमे कौन कि तांकु दौच 50 टंका 60 टंका 70 टंका बट रेनफोर्समेंट रिवार्ड अंडर रे से फीडबैक ता ही आसुची जा अंडर रे तमे तांकु कौन दौच गुड वेरी गुड किमा किछि एई टेक्निक ता कौन करबा क्लासरूम कथा जते बेले आमे आसुचे इंटरेस्ट आसीबो सेते बेले जते बेले आमे छुआ को रेनफोर्स करूचे किछि गोटे भला एक्टिविटी करिया पई एवं रिवार्ड बा ए जो फीडबैक ता आमे सेमान को प्रोवाइड करूचे ता द्वारा तेमानकर डेवलपमेंट हबो से माने आहुरी अधिक रु अधिक पढ़िया पई इंटरेस्ट नेबे आमे जते बेले रेनफोर्स करबा आमे पॉजिटिव रेनफोर्स जते बेले तांकु दोउचे पॉजिटिव रेनफोर्स कोन ना हमर फीडबैक इज कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तो आमे बेटर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक बा रेनफोर्समेंट जते बेले दोउचे छुआ मानक मिंत्रे आमे इंटरेस्ट आनी परिबा ओके नेक्स्ट कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मेथड को स्टेप ता जाउनी एस्टिमेटिंग प्लानिंग रिकॉर्डिंग इंप्लीमेंटिंग डी ए कोडा एस्टिमेटिंग आमे प्लानिंग करूचे रिकॉर्ड करूचे इंप्लीमेंट करूचे ओके तमे प्लान करूछ प्रोजेक्ट मास्टर रो कोन प्रोजेक्ट नबो फर्स्ट सब्जेक्ट रे चूज कलो देन प्लान कलो प्लान टाको कोन करबो इंप्लीमेंट करबो बा एग्जीक्यूट करबो देन इंप्लीमेंट करि सरला पारे कोन करबो रिकॉर्ड करबो ईच एंड एवरीथिंग देन कोन करबो इवैल्यूएट करबो तमे से जिंस को इवैल्यूएट करबो बट एस्टिमेटिंग नाही तो ऑप्शन ए हो जी एठी एस्टिमेटिंग हबो नाही ओके प्लानिंग रिकॉर्डिंग इंप्लीमेंटिंग प्लान करिवो प्लान को रिकॉर्ड करिवो देन तापर कोन करिवो इंप्लीमेंट करि सला पारे से इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट वर्कर केते दूर सक्सेसफुल हैला कि नाही आमे इवैल्यूएट करबा तो एस्टिमेटिंग एठी हबो नाही एंड प्रोजेक्ट मेथड किए देथिले ना किलप्रैक्टिक ओके नेक्स्ट now which of the following is not a teaching skill of stimulus variation skill of reinforcement skill of problem solving skill of explanation which of the following is not a teaching skill A stimulus variation okay कोटा हबो वेरी गुड ऑप्शन सी तो पिला माने एठी टीचिंग स्किल पचारची टीचिंग स्किल ले गोटे माइक्रो टीचिंग हमें जते बेले दोउछे हमें माइक्रो टीचिंग दोउछे सेथिरे हमर टीचिंग रे कोन आसीबो स्टिमुलस वेरिएशन हमें स्टिमुलेट करबा छुआंगु स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट माध्यम रे हमें फीडबैक दबा स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हमें एक्सप्लेन करबा बट स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा कहार स्किल ना स्किल ऑफ लर्निंग
ए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टा हमें कहूचे छुआ जेते बेले लर्न करि थाए से प्रॉब्लम को सॉल्व करी करी लर्न करे किंतु आमे जेते बेले टीचिंग प्रोवाइड करूचे आमे टीचिंग रे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आज ए टीचर यूज करू ना है आमे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन ताकि छोटे स्टिमुलस दोचे सो दैट छुआर रेस्पॉन्स बाहरुची आमे एक्सप्लेन करूचे आमे रेनफोर्समेंट फीडबैक दोचे हेले आमे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करके छुआ को पढ़ाऊ ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कम्स अंडर स्किल ऑफ लर्निंग जेते बेले छुआ माने गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे निजे लर्निंग टा को डेवलप कराउछंती सीए सेते बेले स्किल टा को यूज करूछंती नेक्स्ट आसिला कोन ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन appropriate behavior of a teacher in the event of a student coming late to the class award punishment try to know the reason advise to be punctual inform the parents कोटा is not an appropriate behavior of a teacher is the event of a student coming late to the class वेरी गुड बहुत बढ़िया बी केमती हम से देछि नॉट एटी नॉट टा पढ़ारे पिले नो द रीजन जानिबा पई चेष्टा करियो एडवाइस टू बी पंक्चुअल छुआटा को पंक्चुअल चेष्टा करियो कहबा पई देन धीरे धीरे इन्फॉर्म करियो पेरेंट्स को कि छुआटा को इन्फॉर्म करियो डज नॉट मीन कि रागिबो बट तम छुआ को टिके स्कूल जल्दी पठाओ आवर करेबे पेरेंट्स को एठी बट आवर पनिशमेंट छुआ को हमें पनिशमेंट दबा नाही ओके Next है कौन ना a teacher statement during teaching that encourages the students to explore more facts is called structuring engagement in the learning process instructional variation probing तो कौन probing माने क्वेश्चन पचारिबा क्वेश्चनिंग probing करिबा बा पचारिबा structuring structure करिबा ना कौन ना instructional variation a teacher's statement during teaching that encourages the student कौन हबो वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन बी कौन ना एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस मो कथा द्वारा मो पढ़ेबा शैली द्वारा जदि कौन होची तम माने एनकरेज होछ ताले मो पढ़ा द्वारा मो लर्निंग प्रोसेस रे मु कौन करि पारुची तुमको एंगेज करके रखी पारुची देन कौन स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम क्लास बी टू पीजी लेवल क्लास आईएस टू पीजी लेवल ना फ्रॉम क्लास एक्सआई टू यूजी लेवल ना फ्रॉम पीजी लेवल ओनली स्वयं प्लेटफॉर्म फैसेस काहू कहूची वेरी गुड बहुत बढ़िया क्लास 9 रु पीजी लेवल पर्यंत से कौन करूची स्वयं एजुकेशन प्रोवाइड करूची नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग मेमोरी रिफ्लेक्टिव एबे पुणी थरे रिपीट हैला देखो आउ गोटे ईयर रे कि कोटा लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग देखो कि हम कहितली ना तुमको हाईएस्ट पचारि थिला हाईएस्ट हला रिफ्लेक्टिव एठी आउ गोटे ईयर रे पचारि छि देखो कोटा लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग ना हमर मेमोरी टा लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग द एवरेज एंड रिफ्लेक्टिव टा हमर हाईएस्ट बुझियला एई जिंस हमें डिस्कशन करके आसीथिले ओके नेक्स्ट आसला कोन 51 डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इन ह्यूमन बीइंग इज फैसिलिटेटेड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉजिटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग एक्टिव थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा तमरो ह्यूमन बीइंग कर कोन हेइ थाए समस्ते टिके सेशन को लाइक करि दियो समस्ते टिके सेशन को लाइक कर दियो एंड शेयर कर दियो पिला माने एंड जो माने चैनल ले नुआ अच्छा चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियो सेशन को समस्ते टिके लाइक कर दियो वेरी गुड कौन हबो भाभी की कुआ
तो जो माने डाइवर्जेंट थिंकिंग कहूछ एब्सोल्युटली राइट जेतेबेले आमे कोन से ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी गोटे करूचे सेई टाइम रे कोन होची छुआर मुंडो माने बहुत जोरे बहुत स्पीड रे काम करूचे और से कोन ना गोटे सिंगल प्रॉब्लम रो डाइवर्जेंट सॉल्यूशन बाहर करिया पई चेष्टा करूची तो ह्यूमन बीइंग मुंडो रे बहुत सारा कथा चालुची से डाइवर्जेंट थिंकिंग रो से गोटे ही सॉल्यूशन बाहर करूची ओके नेक्स्ट an explanation involves giving attendance to a subsequent consequence to an attendance na attendance to a consequence to a sub consequence कोटा अब explanation involving giving ऑप्शन सी करेक्ट हबो माने एटा होची एक्सप्लेनेशन माने होची जिंसटा काहे की हेची कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आमे समस्त को बुझौचे समथिंग एट समवन काहे के जिंसटा करूछंदी काहे के एटा होची आमे जेतेबेले बुझौचे आमे सेटा कहूचे गोटे कन्सिक्वेंस बा गोटे सब्जेक्ट बा गोटे मेथड को काहे के हला कोन पई हला आमे छुआ मानन को बुझौचे एक्सप्लेनेशन माने होची गोटे कन्सिक्वेंस काहे की होची तार रीजन कोन तार कॉज कोन ता कॉज रु तार इफेक्ट कोन बाहरुची सेटा आमे बुझौचे ओके नेक्स्ट okay a student is solving a problem mathematics what is he is contribute to affective learning cognitive learning cognitive psychomotor learning कोटा very good cognitive learning yes से तारा mental thinking ability use करके problem solve करूची which of the following is not a characteristics of teaching profession ता as a teacher तमा teaching profession ना कोटा characteristic नुआ skills authority organization social service कोटा 54 नंबर अरे से पचरिची नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स तो अथॉरिटी आसीबो सोशल सर्विस हबो सबु छुआ मानकर भलो करि परिबो कम्युनिटी पई कंट्रीब्यूट करिबा कम्युनिटी सर्विस करिबा टीचर प्रोफेशनल रोल स्किल्स टीचर पाखरे कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप स्किल एम्पैथी ए सब रहिबा दरकार ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस केमिति करिबो आज ए प्रोफेशनल टीचर मोर टीचिंग प्रोफेशन माने मो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केमिति होबा एटा मो रिस्पांसिबिलिटी किंतु मु अथॉरिटी रोल बा अथॉरिटेरियन रोल केबे भी प्ले करिबिनी मु गोटे डेमोक्रेटिक रोल प्ले करिबी ओके कॉग्निटिव माने कहिथिली डूइंग बा एक्शन एक्टिविटी नेक्स्ट होची कोन व्हिच स्ट्रेटजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल of asking question to students personalized system of instruction program instruction simulation na micro teaching very good option D micro teaching okay next now student centric classroom is meant for addressing individual differences engaging the students for the entire class now helping students to recall their previous knowledge now reducing the teacher oriented lecture कौन student centric classroom is meant for reducing the teacher centered lectures ना कौन
मते फास्ट को स्टूडेंट सेंट्रिक माने कौन स्टूडेंट सेंट्रिक बा लर्नर सेंट्रिक माने कौन स्टूडेंट सेंट्रिक बा लर्नर सेंट्रिक माने कौन ओके ओके बहुत बढ़िया वेरी गुड नाइस ऑसम स्टूडेंट सेंट्रिक माने तुम माने कौन कहूच ना एंगेजिंग द स्टूडेंट टू एंटर क्लास मु कहबी एटा हबनी तमें कहीं एनगेज करेबा एटा तो टीचिंग समय रो टीचर एनगेज करोची आमे 5E रे पढ़ेइले आमे एनगेज करेबा आमे 5E रे पढ़ेइले आमे कोन करूचे स्टूडेंट को रिकॉल करबा 5E माध्यम रे आमे जले टीचिंग करूचे आम लेसन प्रोवाइड करूचे सेते बेले कोन हम छुआ तार प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करिवो देन कोन रिड्यूसिंग द टीचर ओरिएंटेड लेक्चर जदि टीचर दबनी ताले केमिथि हबो ना कोन addressing individual differences आमे address करि परिले ही आमे स्टूडेंट नीड आमे स्टूडेंट इंटरेस्ट आमे पढ़ी थिले बा फर्स्ट द्वितीय नंबर ना तृतीय नंबर क्वेश्चन ने नीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को फोकस करि थाउ आमे नीड इंटरेस्ट एबिलिटी को फोकस केमिति करिबा ना जेते बेले आमे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करि परिबा छुआटार नीड कोन अछि छुआटार इंटरेस्ट कोन अछि छुआटार एबिलिटी केमिति अछि सेही हिसाब रे आमे छुआ मानक मेंटल लेवल छुआ मानकर एज जानि पारले ही छुआ मानकु लर्निंग प्रोवाइड करिबा बुझिएला काहे कि ऑप्शन ए होछि ओके That's the code. During presentation in a classroom, a teacher gives a lot of positive and negative examples. This is related to which level of learning? Reflective level, understanding level, memory level, autonomous development level. जेतेबेले तो जेतेबेले टीचर गोटे प्रेजेंटेशन क्लासरूम रे करूछंती सेतेबेले से लॉस्ट ऑफ पॉजिटिव एवं नेगेटिव एग्जांपल दउछंती ताहाले एटा को लेवल ऑफ लर्निंग सहित रिलेटेड वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन बी आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल आम बुझीबा पाई आम कंप्रिहेंशन पाई एटा हेल्पफुल होची एंड एवरीवन मु बार बार कहूची जो माने सेशन ने नुआ अछंती पिले टिके लाइक कर दियंतो जोटा कि बूस्ट करबा कि कॉन्फिडेंस गोटे टीचर प्रेजेंट तो रहू नांदी आछंदी जाउछंदी स्टिल जो माने सेशन को नुआ आछंदी जॉइन करूछंदी एंड जॉइन करिछंदी लाइक करू नांदी टिके सेशन को लाइक कर दियंतो एंड यस पिला माने एबे भी समय अछि जो माने इंटरेस्टेड अछि हमर द्रोण 10 बैच स्टार्ट हे जाई छी फाउंडेशनल बैच डिटेल्स रे टीचिंग एप्टीट्यूड हो हमर सी एजुकेशनल अवेयरनेस हो करंट अफेयर्स हो जा भी हो सब किछि डिटेल साइंस आर्ट्स रो इथरे क्लास होछि जो माने इंटरेस्टेड स्टूडेंट एबे तमरो सेल मध्य चली छी तमरो डिस्काउंट तो सेल ले ही हे जबा मंथ एंड सेल चली छी मार्च मंथ एंड सेल तमे एबे 2 डेज सेल अछि तमे द्रोण 10.0 बैच परचेज करि परिबो यूज कोड YT46 फॉर आहुरी डिस्काउंट सेल ले मध्य तो जो माने इंटरेस्टेड अछि स्क्रॉल होतवा नंबर रे कॉल करके तम माने जॉइन हेई पारिबो ओके नेक्स्ट now suppose you are teaching a topic in the class and the student asked a question unrelated to the topic what will you do तमे गोटे टॉपिक विषय रे पढौछ एवं स्टूडेंट माने आउ गोटे टॉपिक अनरिलेटेड टॉपिक विषय रे क्वेश्चन पचारुछंती सेठी आज ए टीचर तमको कोन करिवार अछि now you will encourage him to ask such question to develop fearlessness in his students तो सेमानकर फियर टाकू बा भय टाकू दूर करिया पई सेमाने एमिति क्वेश्चन पचारंतु बोली तमे एनकरेज करैबो ना you will disallow him to ask such question तांको disallow करबो ना you will consider it as a case of indiscipline तमे एटाको indiscipline भाबिबो ना you will answer the question after the class ना क्लास पर तुमे क्वेश्चन ता तांको बुझेइबो कोटा हो पिला माने yes माने कहबो yes very good
बट आमे कौन करबा ना एबे आमे क्लास रो पाठ पढ़िबा एवं क्लास लास्ट रे मु तुमको ए विषय रे बुझेई देबी तमर जहाँ भी डाउट अछि तमे क्लास लास्ट रे बुझि नबो देन कौन ना spare the road and spoil the child gives the message that undesirable behavior should be punished. Now the teacher is friendly the student. Now it is an activity centered class. Now there is more freedom and flexibility in classroom teaching. कौन कोटा हवा 59 तमे केमिति अनडिजर्व spare the rod spoil the child कौन हवा 59 तो এটা কোন spare the rod spoil the child very good option A undesirable behavior should be punished तो spare the rod spoil the child is a traditional method तो ये ट्रेडिशनल मेथड रे कौन कुहा जाई छी ना हमें कौन करबा छुआर जहाँ अनडिजायरेबल बिहेवियर अछि ताकू पिटी करी जो तार आगरु हमर जो दंड मुक्त अंचल एबे कौन पाई हे गला आगरु कुटा पडुथुला भूल करिवो कुटा तो सी जहाँ पनिशिंग बिहेवियर बा डिसरप्टिव बिहेवियर करिवो ताकू पनिशमेंट टा गोटे भूल नुह तो सेही जिनसटा कुआए छी कि माने जो हमें शारीरिक पनिशमेंट दोचे सेया नुह बट स्प्रेड द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड मींस अनडिजायरेबल बिहेवियर शुड बी पनिश्ड ओके CIET स्टैंड फॉर जो CIET कुआउचे एटा कहां बाई सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी कौन हो पिले CIET स्टैंड्स फॉर very good option C Central Institute of Educational Technology next which of the following is not associated with learner related factor affecting learning learner's mental cognition level of aspiration teaching methodology readiness and willpower ए भितरु कोउटा लर्नर रिलेटेड फैक्टर नुह जोटा लर्नर रो लर्निंग को अफेक्ट करूची 61 नंबर मते लागलानी मो क्लास सरी जीव हेले पिला मानकर लाइक ता आस करबनी मो पीरियडिकली लाइक यस टीचिंग मेथोडोलॉजी मो पीरियडिकली एमती लाइक मागुची केमती कहलो बाबू 4 दिन होला किछि खाइनी बाबू मते देई दियो जेमती कहंदिनी मो सेमती कहछि पिले रे क्लास एते समय कलेनी लाइक गोटे देई दियो जॉइन तो हो ना लाइक गोटे देई दियो ठीक अछि से कोन कहला which of the following is not associated with thought learner related affecting learning the learner related factor asla learners mental cognition छुआरा मेंटल एबिलिटी कौन अच्छी से केमिति अवस्था रे अच्छी तारा स्टेट ऑफ माइंड कौन अच्छी लेवल ऑफ एस्पिरेशन छुआटार गोटे जिनस पाइबार इच्छा एस्पिरेशन जानिबार इच्छा सबु जिनस जो उद्वेग उन्मादना केमिति अच्छी देन रेडीनेस एंड विल पावर आमे जानि छे सबुरी मूल रहउची रेडीनेस जदी छुआटा पढिबा को रेडी नाही तमे ताको जदी खीरी सर पूरी देकी नेले भी से पढिबो नाही काहे ना से बे रेडली मेंटली एंड फिजिकली से रेडी नाही एंड विल पावर मोर इच्छा नाही माने तमे माने जेते चाहिले भी किछि भी करि परिबो नाही ओके नेक्स्ट which of the following is not associated with motor learning playing piano learning swimming acquisition of learning driving car सब क्लास हबो वेट पिला माने बहुत बढ़िया थैंक यू सुनीता थैंक यू प्रज्ञा यस which of the following is not associated with motor learning 62 नंबर C तो प्लेइंग पियानो जेते बेले हमें प्लेइंग करूचे हमें मोटर मूवमेंट होची स्विमिंग बेले मोटर मूवमेंट होची कार चलेले मोटर मूवमेंट होची किंतु नॉलेज एक्वायर करबा पई मोटर मूवमेंट हो नाही ओके
जल्दी जल्दी क्लास सारी दियो एंड क्लास लास्ट रे मु तुमको मोर हताशिया कविताटा सुनै कि जीबी, सियोर सुनै कि जीबी। नेक्स्ट कौन ना व्हिच स्ट्रेटजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन। कि व्हिच स्ट्रेटजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट, कौन हबो? वेरी गुड, माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट बा which strategy can be used for developing creative thinking, role playing, problem solving, brainstorming, project method। क्रिएटिव थिंकिंग आमे कोउथरे बेस्ट यूज करू, व्हिच स्ट्रेटजी यूजफुल, ब्रेनस्टॉर्मिंग। पिला माने क्लास बहुत जल्दी सरी जीवा, क्लास सरीवा भितरे एटलीस्ट 500 लाइक कर दियो, मैं एतिक त जानिमी कि 500 टंका पाइली। सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। को मेथड रे हबो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना ब्रेनस्टॉर्मिंग? तो राइट आंसर होची ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जेते बेले छुआटर माइंड चली थाए तो सेते बेले कोन हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग रे कोन ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग रे तमे सॉल्यूशन पाई पारो, मे भी तमे प्रीवियस जिंसटा को यूज करके जहां नॉलेज रखिछो प्रॉब्लम सॉल्विंग रे यूज करि पारो। किंतु ब्रेनस्टॉर्मिंग रे केमिति क्रिएटिविटी आसे ना, जेते बेले तम माइंड चली थाए चारि दिगरे, तमे एटा सेटा तो डाइवर्जेंट आइडिया तमरो ब्रेनस्टॉर्मिंग रे कलेक्ट हेइ थाए, सेते बेले इंस्टेंट तमे ब्रेन को यूज कला माने तमरो इंस्टेंट आइडियाज गुडा को क्रिएट हेइ थाए। नेक्स्ट आसला, व्हेन ए टीचर ट्राइज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कांसेप्ट अमंग द स्टूडेंट्स, व्हिच टीचिंग मॉडल टीचर प्रेफरेंस टू यूज, नॉन डायरेक्टिव, सिंथेसिस, रोल प्लेइंग, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोडा हबो? Non-directive. When teacher tries to develop self-awareness and self-concept among, very good, very good. A, C. Role playing रे केमती हबो? Non-directive counseling. Yes, Carl Roger. Option A हबो। नॉन डायरेक्टिव जेतेबेले टीचर छुआटर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कांसेप्ट डेवलप करबा को चाहउछदी, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग द्वारा माने आमे छुआटा को इंटरफेयर करबानी, केवल आमे सपोर्टर फैसिलिटेटर बारे थिबा, छुआ को एमिति स्कोप बा एमिति एनवायरनमेंट दबा से निजर सेल्फ रियलाइजेशन करि परिबो। नेक्स्ट आसला कोन ना, द इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड विथ चॉइस ऑफ कंटेंट, प्लानिंग अबाउट यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ना कौन डायग्नोसिस ऑफ द एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ना सुइटेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। कौन हबो? 66। वेरी गुड, ऑप्शन सी, डायग्नोसिस ऑफ द एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। सेते बेले डायग्नोसिस करबा द्वारा सेमानकर थ्रू आंसर पाइबा द्वारा हमें जानि परिबो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो कौन ना, होल वर्सेस पार्ट मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग। होल वर्सेस पार्ट ता को मेथड ऑफ टीचिंग रे काम करि थाए ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग, ट्रायल एरर लर्निंग, ना ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन हम पिला माने? एटा तम मानक पई क्वेश्चन रहिला, तम माने कहिबो। देन देखो, द 5E मॉडल लेसन प्लानिंग इज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। द 5E
70टा क्वेश्चन ने सरीबो 67 68 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ना ऑपरेंट कंडीशनिंग ना कौन ओके एटा भी तम मानक पई टैक्स रहला देन ए गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड ऑथेंटिक ना रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव रिसोर्सफुल एंड कॉम्पिटेंट रिसोर्सफुल ना रिलायबल yes constructivist एटा भी कहबो and last number question which maximum of teaching is most appropriate for teaching grammar at school induction to deduction psychological to logical empirical to rational and simple to complex ता आज टोटल ऊपर एटा तम पई टैक्स चारटा क्वेश्चन रहिला निहाती भाबरे आंसर दबो क्लास केमिति लागिला पिला माने निहाती भाबरे कमेंट जणेबो आजिर क्लास एतिकी सेशन को नेकी थिला आहुरी किछि थ्योरी अछि मु एटा सीडीपी बाय सुनीता मैम टेलीग्राम चैनल ले अपलोड कर देबी आडा ओडिया रे मध्ये अपलोड कर देबी जो माने आडा ओडिया रे अच्छा से माने मध्ये अवेल करि परिबो एवं कोन से सब जिंस तम माने प्रैक्टिस करि परिबो थैंक यू एवरीवन जदि सेशन टी भल लागि थिबो जो माने चैनल ले नुवा अच्छा चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दबो निहाती कमेंट बॉक्स रे मु तम फीडबैक अपेक्षा रे रहिली क्लास टी तम मानु केमिति लागिला फ्रूटफुल हैला ना फ्रूटफुल हैला नाही कोन रहिला निहाती बाबरे पिला माने मु तमर YouTube रे 12टा बेले होउची तमर कमेंट सेक्शन नो फीडबैक ही पिला मानु को एनकरेज करेबो जदि भलो थिबो पिला माने एनकरेज हेबे से वीडियो टी देखिबा पई जदि तमरा फीडबैक खराब अछि ताले पिला माने आसीबे नाही तो तमे ऑनेस्ट फीडबैक दबो तम मानु को क्लास टी केमिति लागिला ओके निहाती भाबरे मु कमेंट सेक्शन में तमरा फीडबैक रो अपेक्षा रे रहिली जदि सेशन टी भल लागि थाए समस्त लाइक करि दबो एवं निहाती भाबरे मते कमेंट दबो तमरा फीडबैक नेक्स्ट किछि अपकमिंग सेक्शन एमिति आनिबा पई बा किछि न्यू जिंस करिबा पई हमको हेल्पफुल हबो थैंक यू एवरीवन क्लास टी को एटी एंड करूछि देखा हबा काली काली तो नुह हमर मंडे रो 12टा बेला सेशन नि थैंक यू सो मच एवरीवन कांस्टेंटली जो माने एते समय मो सहित थिला क्लास कला आजिरा सेशन टी मते तो बहुत भल लागिला मते फील हेलानी कि एते समय धरि कि मु क्लास कली एंड यस निहाती बाबरे कमेंट सेक्शन ने कमेंट दबो लाइक दबो तमको